Good evening, Namaskar. Thank you for joining. Uh, पिछले दिनों में कुछ चीजें हुई है which are very interesting and अभी फिलहाल recently अभी ये हुआ कि there was a book release function in Hyderabad by Professor M. B. Sastry and superstar Pawan Kalyan released the book and release करते वक्त उन्होंने काफी अच्छा speech दिया and he proposed that Netaji's ashes be brought back from Japan and it need not stay in Renkoji temple and it should be brought back. Uh, so he gave a speech in Telugu and the speech is nice. I heard the speech and it's quite nice. First of all, Pawan Kalyan garu, it was a nice speech. Thank you for showing your emotions, your respect for Netaji, and that was a very heartening thing to hear. The emotions that you felt when you went to Renkoji temple. But having said that, there is a lot of complicated history and politics into this, and it's not as simple a thing as you imagined it to be. तो इसमें काफी सारे complications हैं, and I wish somebody had briefed you about the false history that has been taught, the false history that has been narrated till now about those ashes being of Netaji. Uh, you said in your speech that some people might doubt whether those are Netaji's ashes, and for them, a DNA test can be done. Well, the thing is that it's not some people doubt whether those are Netaji's ashes. It's a very nice thing. It's a very honorable thing which the priests in the Renkoji temple have done to show that respect to Netaji's or the ashes which is alleged to be of Netaji's, which you said. That's correct, and that's an honor which we should appreciate. But to respond to that honor is not to bring back the ashes. If we have to really show our appreciation for that honor which has been shown to Netaji's memory, it would be by telling the truth, and the government should tell the truth. It is not a simple step that bring back the ashes. There have been many efforts in the past, and obviously there are some neo converts uh, in the Bose family who have suddenly started believing that Netaji died in the plane crash. But it has been proved beyond doubt that there was no plane crash and there was no question of Netaji's death. So, Pawan sir, here's my appeal. It would be nice, it would be very nice of you if I could meet you and tell you, brief you about the details. I live in Hyderabad, uh, and my Andhra connection, my Telugu connection is very strong. I'm married to a Telugu lady, so hopefully, I mean that connection will work, and it would be a nice thing to meet you. And if you have some time, if you could make some time, I would be very happy to meet you. Present my book, my English biography of Netaji, uh, which has been recently published, and tell you in some detail what the real story is. So that is where we stand today, and we have been in Calcutta for the last couple of times. In the last 1 month, we have been to Calcutta. Last 1 month, we have been there a couple of times and did a lot of lectures and meetings, public speaking. The response was good, not as much as we would have liked it to. जितना होना चाहिए था उतना हमें रिस्पॉन्स मिला नहीं, पर ये तो साफ है अभी कि लोगों में इंटरेस्ट बहुत पहले से काफी ज्यादा है एंड ये इंटरेस्ट मेरे ख्याल से बढ़ता रहेगा और इंटरेक्शन इंटरेस्ट और भी देखने को मिलेंगे तो आपसे
मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस सिटी में भी हैं, प्लीज़ ट्राई टू ऑर्गेनाइज़ आवर लेक्चर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचना है। क्योंकि अभी ये पवन कल्याण के स्पीच से एक बात तो साफ है कि हम ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है और लोगों से ज़्यादा लोगों को ये समझाना है। तो आज का सवाल मेन थीम जो मैंने रखा है कि जब ये हालत है, लोगों में कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, तो इस हालत में क्या करना चाहिए? कभी कोई ऐसा सरकार बनेगी, कभी कोई सरकार सामने आके सच बताएँगे या फिर हम ऐसे ही मतलब लड़ते रहेंगे जनरेशन पे जनरेशन और इस पे सरकारी ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो क्या होने जा रहा है ये तो बताना मुश्किल है, बट हमारा जो काम है कि सच के लिए लड़ना और लोगों तक ये मैसेज लेके जाना, तो वो हम करते रहेंगे। तो आज खास कुछ मेरे पॉइंट और बोलने के लिए नहीं है। आई विल स्टार्ट द डिस्कशंस राइट अवे। तो स्टूडियो में आने के लिए ये लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है। तो आप जॉइन कर सकते हैं। कुछ लोग जॉइन कर रहे हैं, मैं एक-एक करके अंदर लेता हूँ स्टूडियो में। आर्यन, Yeah, good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग, वेयर आर Evening, यू sir. फ्रॉम? I'm from Ranchi, Jharkhand. झारखंड, रांची, Yes, sir. वेरी Sir. गुड। Yes, sir. Sir, I want to ask that. Sir, I want to ask that. Does Modi ji know about this whole issue and what this Baba matter is about? He does know all the thing, or he does not have any idea. Well, he's the prime minister. Every intelligence agency reports to him, and he is not a novice. He is not a new. He and before he became prime minister, he had been uh, talking at various places very highly about Netaji. INA के एसोसिएशन में जाके मीटिंग किए हैं, सेमिनार्स किए हैं एंड उन्होंने गुजरात में नेताजी का स्टैच्यू लगाया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको पता नहीं है। और ज़रूर पता होगा अभी जब कोई डिसीजन लेते हैं सरकार में तो उसका दे थिंक बियॉन्ड द इमीडिएट, दे लुक बैक, दे लुक अहेड कि कोई डिसीजन का क्या रिपरकशन होने जा रहा है, क्या-क्या हो सकता है। तो जैसे आज़ाद हिंद सरकार की 75th एनिवर्सरी के लिए जो प्रोग्राम बनाया रेड फोर्ट में, उसमें अगर मोदी जी जाके फ्लैग होस्टिंग किया है, तो उनको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज का हिस्ट्री क्या रहा है, उसका बाद में क्या हुआ है उनके साथ और खास करके इफ नाउ ही हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप नेताजी स्टैच्यू इन नियर द इंडिया गेट, तो फिर उसमें भी उनको पता होगा कि उसका रिपरकशंस क्या हो सकता है बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल इश्यू। पुटिंग अप नेताजी स्टैचू नियर इंडिया गेट, अगर उस पे आप देखेंगे कि इट्स गिविंग हिम द प्राइम प्लेस इन द पैंथियन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, एकदम हार्ट ऑफ इंडियाज कैपिटल। तो एंड उसका जो रिएक्शन आया था, जो फॉरेन मीडिया में खास करके और हमारे ब्राउन साहिब्स के ट्विटर हैंडल से जो रिएक्शन आए सर कि किसी ने तो फिर कोर्ट में भी केस कर दिया था कि सारे फ्रीडम फाइटर्स का रहना चाहिए उसको अल्टरनेट करके, मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, किसी जर्नलिस्ट ही ने किया था तो शायद। तो ये नहीं ये पिटीशन डाल दिया था कुछ 30-40 जर्नलिस्ट या पब्लिक फिगर्स जो हैं वो मिलके पिटीशन डाल दिया नेताजी के पास के मोदी जी के पास के सारे फ्रीडम फाइटर्स का होने चाहिए। तो अब तक जब गांधी जी की बात होते थे सारे चीज गांधी जी पे फोकस था, पंडित नेहरू के ऊपर फोकस था, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, दिक्कत नहीं था। नेताजी को जब तक ये 70 सालों से जो साइडलाइन किया गया उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब जैसे ही नेताजी को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, सेंटर में ला रहे हैं, तो उसमें लोगों को दिक्कत होने लगी है। तो ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो रहेगा, बट उससे भी बढ़कर है कि जो इमेज एक बनाया गया था, मैं बार-बार ये बोलता रहता हूँ, नेताजी का जो एक इमेज बाहर देशों में जो बना बना के रखा गया है पिछले 60-70 सालों से, फॉर दैट ही वाज़ अ नाज़ी एक्सिस कोलैबोरेटर एंड दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। That image needed to be broken.
and setting up this statue is going to make a very strong statement on behalf of India that we don't care what you think. He is our icon, he is our idol, and that is a very strong statement. तो इसका रिपरकशन जो है बहुत फार रीचिंग होगा, काफी फार रीचिंग होगा। जी सर। सर और आपको क्या लगता है सर कि इंडो मतलब वो वियतनाम वार में भगवंत जी का इन्वॉल्वमेंट के लिए ही गवर्नमेंट मतलब वो थोड़ा-सा मतलब रिज़र्व्ड है, नहीं ट्रुथ नहीं रिवील कर रही है इसी वजह से क्या? कि उनका बहुत सारे वार्स में इन्वॉल्वमेंट था तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये तो है कि भगवान जी ने जो कहा है, जी आई सर। मीन इफ इवन इफ a certain percentage of it is true, जी तो सर। फिर तो बहुत सेंसिटिव इशू है ये। जी सर। वियतनाम वॉर की बात की है, कोरियन वॉर की बात की है, 1965 की इंडो पाक वॉर की बात की है, सर 1962 में इंडो चाइना वॉर की बात की सर है, इन्वॉल्वमेंट। सर कॉनडम में आपने मतलब एक लेटर कोट किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जाके पीएलए के एडवांसमेंट को रोका था। तो ये अगर सही है तो फिर तो गवर्नमेंट को तो पता होगा मतलब। अब गवर्नमेंट को तो पता होगा ही, बट ये भी है कि गवर्नमेंट, उस जमाने की गवर्नमेंट वाज नॉट फेवरेबली इंक्लाइंड टू बोस, सर एंड वो सर वी नो। मैं हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने लिखा है कि मैं बॉर्डर जाके पीएलए का एडवांसमेंट को रोका हूँ, तो अगर इतना बड़ा हो रहा है वार के रिलेटेड तो तब तो मतलब श्योरली पता ही होगा मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में। नहीं, पता तो जरूर होगा, बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि उस जमाने में गवर्नमेंट वाज नॉट फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेताजी। और हमने देखा है कि सरकारी फाइल्स जो है उसमें काफी डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जानबूझ के उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन डाला जाता है। कुछ जैसे एक एग्जांपल तो बहुत क्लियर है कि जैसे जब प्रणब मुखर्जी गए थे जर्मनी में एमिली शेंकल से मिलने और एशेज को वापस लाने के लिए बात करने के लिए, तो वहां पे फैमिली मेंबर से पता चल रहा है कि एमिली शेंकल वाज वेरी एंग्री विथ हिम एंड डिडंट इवन वांट टू मीट हिम। तो किसी भी तरह मिलके मतलब उनको घर से बाहर करा दिया। तो बट व्हेन प्रणब मुखर्जी केम बैक एंड फाइल्ड हिज रिपोर्ट, सरकारी फाइल से जो मिल रहा है दैट ही हैड अ फैंटास्टिक रिपोर्ट मीटिंग एंड ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय एमिली। तो ये जो है डिस्टॉर्शंस जो है ये सरकारी सर फाइल में मतलब आ जाते हैं। तब तो इसका मतलब तब तो इंटेलिजेंस फाइल्स में भी डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं तब तो बिल्कुल कुछ हो भी सकता है, मतलब हो बिल्कुल सकता हो है सकता है, बिल्कुल कि हो सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ और गवर्नमेंट जो चाहे उसी को इंटेलिजेंस में रख दे ताकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को पता ही ना चले। बिल्कुल हो सकता है, पर ये जो डिस्टॉर्शंस होता है ये हर जगह पे नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस का ये है कि एक सोर्स नहीं होता है, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं और फाइल्स बहुत सारे जगह पे मेंटेन किए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस। तो आप अगर डिफरेंट सोर्सेस से फाइल्स को निकालोगे और उसमें टैली करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो अगर डिस्क्रिपेंसी कहीं पे है तो वो पकड़ा जाएगा। जैसे ये प्रणब मुखर्जी का नोट जो है वो तो पकड़ा जाता है ना कि वो उन्होंने सच नहीं लिखा। तो हुँ। ये कहीं पे कुछ हो सकता है कि कुछ अनफेवरेबल अनचैरिटेबल कमेंट्स कुछ डाल दिया हो फाइल में, तो वो हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। बट ऐसा कुछ वो नहीं, इट्स अ सेंसिटिव मैटर। इसमें पब्लिक रिएक्शन भी काफी ज्यादा होगा। बट इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स, इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स, इट कैन डू इट, इट कैन डू इट इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, फेज्ड वे। तो अभी तो 2022 हो रहा है, 2024 की इलेक्शंस के लिए 2 साल बचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं कि मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, इलेक्शन से पहले करेंगे। पता नहीं कैसे बोलते हैं कि उनको मोदी जी ने खुद बताया है या उनको सपने में आया है, पता नहीं है। पर अभी तक जो इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि तो ऐसा एज फार एज द डेथ मिस्ट्री इज कंसर्न, डिसअपियरेंस मिस्ट्री इज कंसर्न, कुछ खास वो नहीं मिला है। कुछ खास इंडिकेशन हमें मिल नहीं रहा है कि सर दैट इज इट। सर और सर और एक चीज़ पूछना था एक कि एक चीज मैं अभी बता दूं, बहुत सारे लोग स्टूडियो में हैं, एंटर किए हैं, बट प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। इफ यू कीप योर कैमरा ऑफ एंड इफ आई कैन नॉट सी यू, then I will not be able to let you into the screen. हाँ जी, बताइए। sir and how many letters of Bhagwan ji have you got hold of? Means total how many letters from which you could perfectly make that what is the identity of this man? करीब 200 लेटर्स तो है मिले हैं उनके हाथ से लिखा हुआ, सर पर इन आपने बंगाली इंग्लिश। कॉनंड्रम में लगभग 15-16 लेटर्स कोट किए हैं और बाकी भी अगर कोट हो पाता तो फिर लोग देख पाते और जहां जहां पे नहीं, देखो कोट नहीं किया है, कोट बहुत सारे लेटर्स से किए हैं।
वो बहुत सारे लेटर्स से किए हैं, बट पिक्चर्स डाले हैं मे बी 15-16 लेटर्स के। हाँ सर, पिक्चर्स अब 15-16 थे, जैसे तो सारे आपने वो तो जो एक, व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक इट कैन नॉट बी अ फोटोग्राफिक कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स, इट इज वी आर बिल्डिंग अ नैरेटिव, वी आर डूइंग सम एनालिसिस, उसके सारे लेटर्स का फोटो तो नहीं दे सकते हैं, उठा के तो दिया है, ऐसा कौन सा फिर तो कोई किताब ही नहीं लिख पाएगा। अगर नेताजी का बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे सारे नेताजी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो तो कंपाइलेशन हो जाएगा फोटोग्राफ्स। हाँ सर, वो भी बात है। सर मतलब वो तो जो 200 लेटर्स हैं उसमें उन्होंने कुछ ये मेंशन नहीं किया कि वो फिर वो मतलब वो साइबेरियन गुलाग से इंडिया पहुंचे कैसे, मतलब वो रूट ये कौन उन्होंने सा बताया था? नहीं, ये उन्होंने बताया नहीं, क्लियरली कभी बताया नहीं। हमें 2-3 सोर्सेस से इंडिकेशन मिल रहा है। एक तो है जो उनका हैंड ड्रॉन मैप मिला वहां फैजाबाद में उनके कमरे से, उसमें से एक आइडिया मिलता है कि कैसे हो सकता है कि कैसे आए थे वापस। तो उसमें क्योंकि पूरा जो सेंट्रल एशिया, रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा मैप हैंड ड्रॉन है, और वो दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए, एरो सर तो मार्क्ड है, उसमें हाँ से आइडिया मिलता है। हाँ और सर दूसरा तो चीज है, जो उनके साथ जो रहते थे वहां पे, उन लोगों को कुछ कुछ कभी बताया होगा, तो उन लोगों ने जो रिकलेक्ट किया वहां से आइडिया मिलता है, बट उन्होंने खास करके स्पेसिफिकली इसका जवाब किसी को कभी दिया नहीं। सर सर, और एक चीज मतलब एक अजीब लगता है कि मतलब उनका एज भी उस समय बहुत था, तो अकेले टहल के आना उसके बाद बिना खाने पीने के, फिर तो बहुत दिक्कत वाला काम नहीं, होगा। एज काफी कहा था जब आए हैं, अगर मान लेते हैं कि 51 या 52 में आए, तो ही वुड बी 53, 54, 55। तो उसमें ऐसा, इट इज नॉट दैट मच ऑफ एन ओल्ड एज, इन द अर्ली मतलब सर 50s, इतना भी ओल्ड एज नहीं उन है। हाँ, वो क्या मतलब गुलाग से एस्केप किए थे किसी नहीं साइबेरियन नहीं नहीं, गुलाग से? एस्केप की बात कहीं पे नहीं किया है उन्होंने, एस्केप की बात कभी नहीं किया। आप प्रॉपरली कॉन्ड्रम पढ़ो, आपने पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि इसका जवाब हमने दिया है वहां पे। आपको इस पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, आप ध्यान से इस पढ़िए कि हमने जो इस लिखा है, व्हाट ही सेड इज दैट ही हेल्प्ड the Soviet Union in certain critical matters, and the Soviet Union government at that time, under Stalin, treated him uh, nicely, gave him facilities, put him in touch with China. तो वो चाइना में आए, चाइना में गवर्नमेंट के साथ उनका रिलेशन बना, एंड ही डेवलप्ड अ वेरी गुड पर्सनल इक्वेशन विद माओ सेतुंग, एंड फिर वापस आए इंडिया में। तो ये 48-49 की बात है, उसके बाद इंडिया। हुँ। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन सर कि व्हेन भगवान जी डाइड एक्चुअली इफ एनीवन सॉ हिज बॉडी दे वुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हू वाज दिस पर्सन, देन हाउ कुड द फॉलोअर्स मीन्स conceal the body so well so that no ordinary person outside the means Banerjee family, Rita Banerjee family could see the ये body actually? आप देखिए मेरे चैनल में रीता आंटी के साथ जो इंटरव्यू है, वहां पे उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है एग्जैक्टली माहौल कैसा था, व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन, हाउ व्हाट मतलब वाज द उनका सिचुएशन। हाँ, जैसे मैंने वो इंटरव्यू देखा तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो बॉडी को ढक दिए थे पूरा, मतलब ताकि कोई फेस ही ना देख सके उसका। ऑब्वियसली, आई मीन इट वाज नॉट मेड पब्लिक, तभी तो इतना वहां पे बवाल खड़ा हो गया कि इतना पब्लिक मूवमेंट हो गया, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, इतने हाँ, सारे वो हो गए, लोग भड़क गए कि हाँ बताना और होगा कि हाँ सर, इनका आइडेंटिटी क्या है, और ये कौन है। सच हाँ हाँ सर, ये सच है कि उनको बॉडी को नेशनल फ्लैग में लपेट के ले गया गया था ये मुझे जब पता क्रिमेशन। नहीं है, ये सुना है, पर इसका ये तो सुनी सुनाई बात है, एंड अच्छा, इट्स इरेलेवेंट, अगर बॉडी नेशनल फ्लैग में लपेटा गया या नहीं, हाँ, इट्स नॉट रेलेवेंट। हाँ। पर उनके क्रिमेशन को पुलिस बहुत क्लोजली फॉलो कर रही थी शायद, मतलब बिल्कुल कर वो। रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, अच्छा सर, तो क्यों और करेंगे। एक हाँ सर, फाइनल चीज पूछना था सर कि सीधी सी बात सबसे ये है हाँ कि जहाँ पे गुप्तार घाट है, सरयू के जहाँ बैंक्स जो है, वहाँ कैंटनमेंट एरिया है, वहाँ इट्स अ सेक्रेट प्लेस, वहाँ जाके किसी कोई जाके ऐसे क्रिमेशन नहीं कर सकता। अगर क्रिमेशन करेगा तो पुलिस पकड़ के इमीडिएटली ले जाएगी। हम्म। और सर सबसे मीन्स द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग आई फाइंड इज दैट द रियल मीन्स hypocrisy of the Bose family members means they were first opposing the plane crash theory, and when the Bhagwanji narrative gained dominance they again shifted back to the plane crash theory in a matter of one तो ऐसे two ही तो days होना है ना, ऐसे ही तो होना है, ये तो होना ही है, ये तो क्योंकि जब भी ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, मेन स्ट्रीम हो जाएगा कि दैट ही नेताजी वाज बैक इन इंडिया मतलब एंड कि लिव्ड हियर फॉर उनको सो मेनी उनको क्या इयर्स। लॉस है, उनको क्या लॉस है कि उनको मतलब लॉस, वही तो आप सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए आप।
उनको लॉस ये है कि वो सारे बैठे हैं आप कितने बोस फैमिली मेंबर्स के कितने लोगों का नाम जानते हो? मतलब चंद्रा के बोस और फिर जो यूएसए में 2-3 जन है। अपने यही है कि आपको नाम भी पता नहीं है। आपको नाम इसलिए पता नहीं है कि पब्लिक फील्ड में उनका आइडेंटिटी एक है कि नेताजी का ग्रैंड मतलब नेफ्यू, हाँ, नेताजी का ग्रैंड निस। आप सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा मतलब हूँ, आप सवाल जयंती कर रक्षित लीजिएगा। का, हाँ जयंती दी आप का सु, फिर वो तो आप पता है। सुन लीजिए, आप एक सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब ले लीजिए, या फिर सवाल कर लीजिए, मैं दूसरे स्पीकर को ले लेता हूँ। यस आप सर आपको सुनने का पेशेंस नहीं है, जवाब मैं दे रहा हूँ, आपको सुनने का पेशेंस नहीं यस सर यस। है। या तो आप सुनिए या फिर सवाल करके छोड़ दीजिए। नो सर प्लीज डू। आप जो बोल रहे हैं, आपको मैं अभी पूछा, मैंने आपको नाम बताने के लिए बोस फैमिली से, आपको नाम पता नहीं है। चंद्र के बोस का नाम पता है, बट पॉइंट वहीं पे है कि किसी का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऑल ऑफ देम आर नोन एज नेताजी ग्रैंड नेफ्यूज एंड ग्रैंड। तो जहां पे भी न्यूज आता है, नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू ने ये बोला, ग्रैंड निस ने ये बोला, उसने ये बोला, तो ऑल ऑफ देयर पब्लिक आइडेंटिटी इज लिंक्ड टू नेताजी। तो जब ये सेटल हो जाएगा कि नेताजी केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज नॉट in touch with his family for 30-35 years when he lived here, तो उनका पब्लिक स्टैंडिंग क्या रह जाएगा? तो डर इसी बात। ओके सर ठीक है ना? एंड ओके व्हाट, आर्यन, यस सर, थैंक यू ओके फॉर ओके जॉइनिंग। सर, आई हैव टू थैंक यू टेक सर, द अदर स्पीकर्स आल्सो। ओके हाँ, एंड सर, ओके यस सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आलोक बाबू, কেমন আছো? ভালো। I am fine. হ্যালো। You tell me, how are আচ্ছা you doing? আচ্ছা, তোমরা ঠিকই আছি। তোমরা কলকাতায় এসেছিলে, আনফরচুনেটলি ওই সময় তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারলাম না। আচ্ছা, আমি তোমাকে দুটো জিনিস একটু জিজ্ঞেস করছি। একটা হচ্ছে তোমাদের মিশন নেতাজি, আমি যে কন্ট্রিবিউশনটা দিয়েছিলাম সেটা কি মিশন নেতাজিতে, অর ইট গোস টু ইন্ডিভিজুয়ালি টু ইউ অর অনুজ? আমি পারপাস So ইজ it অন co- it মিশন নেতাজি। it comes to individually to Anuj and me, because মিশন নেতাজির আলাদা করে কোনো ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আচ্ছা কিছু নেই। আচ্ছা What আচ্ছা, is কারণ Mission তাহলে Netaji? আমি Mission Netaji is তাহলে আমি comprised of individuals who work together. আচ্ছা, ওকে আমরা ওকে একসঙ্গে ফাইন। কাজ করি। আচ্ছা, সে আমি জানি। তাহলে আমি দেখি অনুজকেও আমি চেষ্টা করবো কিছু একটা পাঠাতে। ওকে, Sure. আচ্ছা, তো ঠিক ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দুটো ছোট কোশ্চেন করি। আমার মানে তোমাদের মোটামুটি সবগুলো বই কনন্ড্রামও আমার কাছে এসে গেছে, আই এম অন দ্য ওয়ে। প্লাস এই হুম গভর্নমেন্ট ডাজন্ট ওয়ান্ট ইউ টু, এটাও অনেকটা শেষ হয়ে এসছে, এটা অনেকটা শেষ হুম হয়ে এসছে, কনন্ড্রামও ওকে। হাত দিয়েছি। তো আমি আমার মানে কিছু প্রিভিয়াস ইনফরমেশন আর অল দিস থেকে আমি দুটো জিনিস একটু স্পেসিফিকই তোমাদের কাছে ভেরিফাই করতে চাই। একটা হচ্ছে এই যে রিগার্ডিং হিজ ম্যারেজ, হুম এটা কি 100% অথেন্টিক? I have got personally some doubt ওকে। based on See, you have based on certain, no, it's আমি natural. Many people have doubts. Many people have doubts আচ্ছা, regarding marriage. আমি যদি একটা কথা বলি, প্রফেসর সমর্গ ওয়াজ মাই প্রফেসর ইন জেইউ, হুম হুম রাইট? সো মানে ওনার ওকে। কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু জেনেছিলাম। তো যাই হোক, তো তোমরা আরো ডিটেইল এটা নিয়ে কাজ করেছো। আমি যেটা জানতে চাইছি যে মানে কারণ আমার মাঝে মাঝে একটু খটকা লাগে যে এ ম্যান হু ওয়েন্ট ফর such a purpose where with such a secrecy even within his group, it is impossible in a, I mean, domain of thought mind, যে that will unnecessarily invite danger for him. এটা একটা আমার বেসিক, আমার মানে যতটুকু আমি হিউম্যান সাইকোলজি বা মানে যেটুকু আমার পড়াশোনা আর কি, তার বিশেষে আমার একটা পার্সোনাল ডাউট আছে আর সেই জন্যই বলছি যে আপনি মানে আপনি আপনি আমি নতুন বায়োগ্রাফিটা বেরিয়েছে, ওটা পড়ুন। I have done a separate chapter on the question of marriage. I've done a আচ্ছা, separate chapter on marriage. Whether ওকে, আই উইল I গেট mean দ্যাট it বুক। is, yes, please do and read that. But সেই to বইটা answer এখন your আসেনি। question in brief, ওটা অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন। You will get it in Amazon. You will get it in all the shops in আমার Kolkata. আমার একটা ছোট রিকোয়েস্ট, যদি হ্যাঁ, তোমাদের স্কোপ থাকে, যদি তোমাদের স্কোপ থাকে তাহলে এই ব্যাপারটা আরেকটু আই মিন রিসার্চ করতে, যে we মানে have done research. রিগার্ডিং, রিসার্চ করেই লিখেছি, রিসার্চ না করে লিখিনি। We don't give opinions, we give facts.
We are Acha, acha. we are investigators. We are researchers. We give facts. We don't So, give opinions. so, so you believe this is a foolproof? See, it's not a question of belief. আপনি যেটা বললেন যে you have No, no. heard. Your research, your research, your research result is it is a foolproof. I'm answering a question. Acha. Sorry. What you just said that you have Samargo, Professor Samargo was your professor and you heard certain things and you find it difficult to believe. So that is belief. Okay, there is a difference between belief and evidence that we always keep saying. Now, what Hmm. do we have? We have the declassified documents. We have Sardar Patel's papers in the National Archives. We have Emilia's own Hmm. handwritten letters of 1947-48. So the basic, in brief, the conclusion is that there was no legal marriage. They were not legally married, but that there was Hmm. a relationship. Of course, they had a relationship, and Anita Pap is their daughter. So that is in brief, that is the case. And I have not found anything that can question these basic Okay. facts. Other than people's But the, opinion, I have not found anything. But I opinions don't understand. come. No, no, no. You were right. Shamar Go didn't tell me that. Professor Go didn't tell me that. But it is আমার একটা thought process ছিল আর কি। আর ব্যাপারটা হচ্ছে এই whatever document you have found in the declassified documents, we do not know how far what is the authenticity of those documents Well, because you can question the authenticity of all documents and then end up believing nothing. There are uh, listen, and when we do an investigation, it's we don't depend on any one particular uh, source. We cross-check facts from different sources. So, okay. একটা source যদি একটা কথা বলে, if we find one fact from one file, we try to see if that information is being corroborated by the information available from five or three or four other sources, and if it Hmm. is being corroborated, then it is a fact, then it is the truth, because unrelated sources put together, if they are telling you the same thing, it has to be the fact. It cannot be True. a concoction. Right. But the date of that I understand regarding date of marriage there are three versions. Is it true or false? And yes, there are different versions, and the responsibility, the blame for that goes to Emilia Schenkel herself and to the Bose family, particularly Shishir and Krishna Bose and Sugata Bose. They have been spreading Oh, I mean forget about them. I don't want to comment information. on them. There is, Uh, but they control the narrative. You cannot ignore them. They control the narrative on Netaji. They have controlled the that's research bureau along with the government and the Anand Bazar true. group in Kolkata. They have controlled the narrative on Netaji. There, So you there cannot lies ignore. my You have to, doubt. yeah. There So lies my doubt. so you read the chapter, you will like it because there are both uh, gray areas. There are question marks, but the fact of the relationship cannot be doubted. I don't know, but I mean, for a responsible man like him, can he leave behind Well, his? that is I when we mean, say these things, we are imposing our own judgment and views on his life. We don't know I mean, what the situation was. We don't know what exactly his feelings were, what correct, exactly correct. the environment was. So, We don't yeah, know we'll have everything. to. Yeah, we'll have to believe on the available documents. True. I mean, Yes, because documents only speak. Our thought process has no value. But I and thought it is and just I mean the full information, every bit of detailed information is not available because what exactly was going on in Germany hmm, between him and Emilie in 1941 and 42, we don't hmm, have the complete information. We have some eyewitness accounts who have given their okay. versions. We have some documents. We have some interrogation reports, and we have Emilia's own letters. So we are trying to Another thing, reconstruct. another thing in that Bengali book, Oi Mahamanav Ashe, which was mainly composed by initially Leela Roy, then Pavitra Mohan Rai, then Sunil Das mainly. So to their, Sunil Das statement in this Mahamanav, you must have gone through that book. I'm sure. There they say I mean even Bhagavanji has totally disagreed Yes, with that. yes, it is true. I don't want to digress. I don't want to dwell too much on this topic.
but I have made a separate video. You can see it in my YouTube channel. আমার চ্যানেলে আপনি দেখবেন যে গুমনামি বাবা কেন নেতাজির বিবাহের কথা অস্বীকার করেছিলেন। একটা সেপারেট ভিডিওই আমি বানিয়েছি এই প্রশ্নটার উত্তরটা দেওয়ার জন্য। Maybe So maybe for security purpose. Okay, I'll go through that. Okay. yes, please do, Okay. please do, please do. Okay. 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 তো ঠিক ওখানে হ্যাঁ আপনি পেয়ে আর যাবেন। আচ্ছা তুমি কি বেসিক্যালি হায়দ্রাবাদ বেসড না দিল্লি বেসড? আমি দিল্লি বেস ছিলাম। I lived in Delhi for nearly 25 years and I আচ্ছা, নাও shifted to হায়দ্রাবাদ Hyderabad বেসড। last year. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমাদের সঙ্গে ইনিশিয়ালি সায়ন্তন দাশগুপ্ত was also there. He is still If I there. remember, He's he's still there. Of course, he's still আচ্ছা, there. because I mean We have the original mission Netaji is intact. I mean, the five yes, of us who started the group, we are all there. So all of okay, them are still there. okay. আচ্ছা, তোমার যে ভিডিওটা বললে সেটা কতদিন আগেকার ভিডিও অন দিস? ওটা অন্তত বছর দুয়েক আগেকার হবে। বাট আমার চ্যানেলে খুব বেশি ভিডিও নেই। বইটা If you scroll down, you will get it. You will find it. আর আর তোমার যে বইটা বলছো ওই বইটাতে তুমি বলছো ডিটেল চ্যাপ্টার একটা আছে হ্যাঁ, on the marriage issue. on this biography of Netaji. Yes, yes. Okay, I will try to after this finish this book. I will try to get this book. You Okay, will like it. ভালো Please থেকো। do. Thank you, thank you. আপনি ভালো থাকবেন। হ্যাঁ। नमस्कार निखिल, कैसे हैं? First class, sir. How are you? Very well, very well. बताइए। Yesterday I spoke to Anuj, but अच्छा। on line. So, sir, I'll start right away. I don't want to waste anybody's time. नहीं, तो सर, हाँ, तो सर हम लोग का approach, like Anuj told me yesterday, is lobbying for this topic to be taken up seriously by whoever is in power, right? मैं somehow know that I'm not convinced only कि government structures which are designed by the will of the British can change. I have no doubts whatsoever in terms of कल मैं अनुज को इनफैक्ट बोल के शायद मैंने डरा भी दिया था कि I am a big critique of Modi ji. After all the Kashi vigras were broken and Puri mein vigras were broken and now Ujjain mein Mahakal vigras are being broken. 200 Muslim IAS officers have been recently joined with the help of their brilliant training scholarships. तो people like me are very hardcore. मतलब हम लोग को extra logic नहीं समझ में आता है. We just see the apparent. We are stupid Buddhu people, Hindus. I'm a typical Hindu, so I have a thing against Modi ji, and I've been supporting Yogi ji since at least 4 years now. I've been an ardent supporter of Modi ji since before 14, since 12, 11. Before that, I was in the Ramdev's anti-corruption thing, which was tried to be hijacked by IAC people, India Against Corruption, which is now Kejriwal. So वो तो हम लोगों ने तभी समझ लिया था कि ये तो चोर है, because the amount of organization and money, laptops, phones that were there with these people right from the start. Not to get into that, sir, but I'm very skeptical of the system helping this cause, because this cause is revolutionary, sir. Because Netaji himself was revolutionary. There is no way, with that giant of a man, any of these devious हिंदुओं को नोचने वाले structures can survive. And the bureaucracy के साथ तो भूल ही जाओ सर. मतलब even if Modi ji wants any, says कि ये कर लो, वो bureaucracy में ही I feel नहीं होगा. So, sir, you and Anuj, sir, I hold you all so dear to my life कि अगर आप लोग का फोन आ गया ना कि यार निखिल यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, आ जाओ फटाफट, मैं नंगे पाँव आ जाऊंगा सर, मैं हथियार लेके आ जाऊंगा. थैंक यू। पर सर प्लीज मेरे को प्लीज समझाओ ना कि ये अप्रोच दैट वी आर टेकिंग इज हाउ इज इट. I'm sure there are. ऐसा है
ऐसा है कि अ, आप जो बोल रहे हो वो बात सही है, और इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अगर ये डिसअपियरेंस मिस्ट्री को समझना है तो सुभाष बोस की जिंदगी को अच्छी तरह से जानना होगा। और जानने का मतलब ये, मैं वो जो सुभाष बोस का रेज्यूमे है, सीवी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जर्मनी चले गए, प्रेसिडेंट बन गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बातों को बहुत गौर से समझना होगा, सुनना होगा, पढ़ना होगा। तो ये हमारा जो एलीट सेक्शन है, एलीट सेक्शन है, जो पहले एक कैटेगरी होता था, वी यूज्ड टू कॉल कोलैबोरेटर्स। कि ब्रिटिश राज तो ऐसे ही नहीं चला ना 200 साल तक। तो हम बहुत लोग सारे नहीं लोग चलाए। थे जो काम करते रहे उनके लिए, एंड हु वर रिवॉर्डेड, जिनको सालों साल अवार्ड, रिवॉर्ड, टाइटल्स मिलते रहे, एंड दे वर कोलैबोरेटर्स। तो ये जो कोलैबोरेटर सेगमेंट था, इन ये दे बिकम एलिट्स, और आजादी के बाद they remained elites, and they controlled the bureaucracy, they controlled the political narrative, they controlled the social ideas. तो And made it ये जो worse. ग्रुप है, जो कोलैबोरेटर्स है, तो इनके इनके प्रति नेताजी का जो एटीट्यूड, जो वर्ड्स दैट ही स्पोक वर वेरी थ्रेटनिंग एंड मेनेसिंग। ही वाज द ओनली Correct. लीडर ऑफ हिज टाइम जो खुलेआम ये बोलते थे कि ऐसे अगर कोलैबोरेटर्स हैं तो पहले उनको समझाइए, उनको समझाइए कि सुधर जाए। अगर नहीं सुधरे तो लाइक ए डिजीज्ड लिम्ब उनको एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। ये उनके वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है। लाइक ए डिजीज्ड लिम्ब उनको एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये डर अभी भी चल रहा है। और ब्यूरोक्रेसी की बात आपने सही कहा, ब्यूरोक्रेसी डजंट इज लीस्ट इंटरेस्टेड, रादर देयर एन ऑब्स्टेकल। और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी का कोई बहुत खास पॉलिटिकल लगाव है इस इशू मुद्दे को लेकर। तो मैं, बट बीजेपी इज कंपैरेटिवली बेटर देन व्हाट द कांग्रेस पार्टी वाज, एटलीस्ट जो आई एग्री विद अनुज ऑन दैट पॉइंट कि दे आर नॉट They are not होस्टाइल, hostile. दे आर नॉट होस्टाइल, दे आर गिविंग अस द स्पेस टू टॉक अबाउट इट, टू रेज द इशू। तो उस पे जो हम कर सकते हैं और मैं जो भी मैं करना गालियां दे चाहता रहा हूँ हूँ, मोदी जी को खुलेआम। मैं जिंदा हूँ। तो मैं जो, मेरा जो समझ है इस पे, मेरा जो अप्रोच है थोड़ा अलग है अनुज से। बट हम एक साथ ही काम करते हैं, तो वी एग्री, वी डिसएग्री, हम साथ में बना के फिर एक अप्रोच लेके बना के चलते हैं। तो माय अप्रोच इज मोर टू टेक द इशू टू पीपल। तो जितने लोगों के पास हम पहुंचेंगे, जितने लोग जागरूक होंगे, जितने लोग अवेयर होंगे इस पे, जब जब पता चलेगा वो, इसीलिए शुरू में मैंने आज का सेशन शुरू ही किया पवन कल्याण की बात से, कि पवन कल्याण वहां बैठ के जब ये बोल रहे हैं, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतने लोग सुन रहे हैं, और उसका रिपरकशन आ रहा है फेसबुक में, बंगाली ग्रुप्स में दिख रहा हूँ, दे आर सो हैप्पी, दे आर ओवरजॉयड कि पवन कल्याण ने बोला है कि एशेस वापस लाना है। तो दे आर टेकिंग इट एज अ मैटर ऑफ ऑनर, व्हिच इज नॉट Disgrace. नॉट अनट्रू, बट बात की बात को समझने की जरूरत है। तो हम अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसीलिए ये सोशल मीडिया जो है, वी वांट टू यूज दिस टू रीच मोर एंड मोर पीपल। और इसलिए हम बार बार अब रिक्वेस्ट करते हैं आप सब लोगों से कि हमारा जितना ज्यादा टॉक्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, मीटिंग्स होंगे, एंड वी नीड रिसोर्सेज। आई मीन, लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कि सीजनल होते हैं, जनवरी और में अगस्त में आके लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, और बीच में थोड़ा वो हो जाते हैं, मतलब तो आई मीन वी आस्क फॉर रिसोर्सेज, जैसे मेरे टिकर में चल रहा है अभी कि भाई साहब, वी नीड रिसोर्सेज, विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट सस्टेन, वी कैन नॉट सर्वाइव। बट Correct. बहुत लोग कम, बहुत कम लोग हैं, गिने चुने, वही 4-5 घूम फिर के जो कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी करते नहीं है। और मुश्किल की बात यह है निखिल, कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो या तो स्टूडेंट्स होते हैं, या मुश्किल से, मतलब ऐसे तो है कि बेरोजगार भी कंट्रीब्यूट किया, 1 रुपए भेजे हैं। इट इज सो टचिंग, आई वाज सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल कि इतना तो लगाव है, इमोशन है। पर ये इमोशन जो अपर क्लास में है, एलिट और होना मिडिल, चाहिए अपर मिडिल क्लास में है, वो आप रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें, वहां से सर रिस्पॉन्स इसको। हाँ सर, इसको ना आई फील कि ना सर, इसको ना थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई फील whoever is already supporting us, no, if we take voluntary filling up of forms in terms of what they do, how what fields are they in, where are they, basic,
and then we work with us only, मतलब हम लोग ही काम करें, हम लोग ही आगे बढ़ाएं ऐसे. Of course donations are needed, but I think if we do it more structurally, it will go farther, sir. मतलब we need an बात सही है, organization ये आप like सही that. बात कर रहे हैं, इसीलिए और बहुत सर एक लोग और हैं बात, जो पूछते हैं. हाँ बताइए. एक और बात सर, फिर आप आंसर करें, मेरे को घड़ी घड़ी बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता सर. तो और मैं खाली पूछ रहा था कि वी हैव अ बुक, यू हैव सो मेनी बुक्स. मैंने कलंड्रम ऑर्डर की है, आ भी जाएगी अभी. मैंने वो ट्रिस्ट विद महाकाल भी ऑर्डर की है, और मैंने बंगाली की एक महामानव एक है, वो इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, वो मैंने अभी ऑर्डर की है. वो साथ में आप मैंने कन्नड्रम पढ़ लेंगे तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. कन्नड्रम पढ़िए, अच्छा. और जो अभी बायोग्राफी आया है वो बायोग्राफी पढ़ लीजिए. बायोग्राफी में ये सारे जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, वो बायोग्राफी में मैंने डाला है. जो पहले किसी हिस्टोरियन, वो तो प्रोफेशनल हिस्टोरियन से लिखते हैं, बच्चे बड़े लिखते हैं, मैं छोटा छोटा बात लिखता हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने डाला है. जो और हाँ. नहीं कहते हैं वो मैं कह देता हूँ. तो ये बायोग्राफी भी पढ़िए आप. बिल्कुल. और सर मैं पूछ रहा था, मैं ना एक्चुअली पढ़ने में ना बहुत कच्चा हूँ सर, क्योंकि मेरा पूरा जनरेशन ना 86 बॉर्न बॉम्बे का. हम लोग पढ़ाई में ही इतने गंदे थे. आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट वी हैव अ ब्लॉक अगेंस्ट रीडिंग. न्यू जनरेशन सर, आई एम वेरी सॉरी टू बी सो शेमलेसली टॉकिंग अबाउट इट, but this is a fact, sir. मतलब if we can reach so many people with the books, we have to come up with some strategy to either make it an audio book or sell it like paid chapters. ये सब इसका भी कर कुछ रहे हैं. solution? ऑडियो बुक बन रहा है, ऑडियो बुक भी बन रहा है, उसका अरे काम वाह. भी चल रहा है. ओके. तो ये सब सब करेंगे, ये सब करेंगे. हमारे बैंडविड्थ काफी कम है, हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो जितना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, तो और सर आप लोग लोग चाहते हैं हमसे आउटसोर्स जुड़ना. कैसे कर रहा, तो हाउ कैन वी whatever people we are really obsessed with Netaji, how साथ can सब we? दो तीन चीजें हैं, वही तो है. आप हमारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करिए. जो बात जैसे, एक तो है कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम मिशन नेताजी के पार्ट बनना चाहते हैं. वी वांट टू डू समथिंग विद मिशन नेताजी, वी वांट टू बी मेंबर्स ऑफ मिशन नेताजी. पहले तो ये है कि मिशन नेताजी कोई ऑर्गेनाइजेशन या क्लब है नहीं कि आपको मेंबर बनना पड़े. आप कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वी विल गाइड यू. पर अब मेरा काउंटर सवाल ये रहता है, काउंटर क्वेश्चन ये रहता है कि अच्छी बात है आप जुड़ना चाहते हैं, पर आप करेंगे क्या? आप क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं? सो तो क्या स्ट्रैटेजी करने को मेकिंग क्या और करेंगे? नहीं, आइडियाज निखिल, आइडियाज बहुत सारे हैं, आइडियाज की कोई कमी नहीं है. बात करेक्ट. है एग्जीक्यूशन. तो तो सर हमें आप, एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर सकता हूँ सर मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे जो बाकी लोग हैं जो सुन रहे हैं आज अभी यहाँ पे, क्या क्या कर सकते हैं? दो दो पहलू है हमारे कैंपेन का. एक है रिसर्च का, दूसरा है कैंपेनिंग. एक है रिसर्च. मैं पूछता हूँ, जो जो बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ मिशन मोदी जी, मैं बोलता हूँ कि आपके पास क्या टाइम या इंटरेस्ट है कि आप कोई लाइब्रेरी या आर्काइव में जाके 2-3 हफ्ते बैठ के वहां पे काम करेंगे, सामान निकालेंगे लग के. 99.9% फिर पीछे हट जाते हैं. कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम हमारा पोस्ट तो शेयर करिए, टू स्टार्ट विद, दैट इज द बिगिनिंग. तो वो नहीं करेंगे तो बात हाँ. आगे कहां से बढ़ेगी? तो सर एक और बात, सर एक और बात, ये आर्काइव्स में जाके हम लोग फोटो कॉपीज निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकल सकते हैं, तो सर अगर हम लोग बिल्कुल को निकल सकते आप जैसे हम लोग कुछ बता दो कि ये हम लोग को सेक्शन का ये फुल सारे बुक्स का इसमें से ये फाइंड आउट करना है, तो हैं. हाँ, व्हाट आई कैन थिंक ऑफ डूइंग इज मैं सारे फोटोकॉपीज निकाल के मैं अपने साथ एक बच्चे को लेके जाके उसको ट्रेन करके आऊंगा कि ये सारे फोटोकॉपीज मेक अवेलेबल करेगा. फिर एक दूसरा सेक्शन जो एक्चुअली वो स्टडी टाइप के लोग होते हैं ना, जो ज्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनसे फिर हम लोग ट्रांसक्राइब करवाने के, उसको ऑडियो करवाने के नहीं भी. नहीं, उतना जरूरत भी नहीं है निखिल, उतना जरूरत नहीं है. अच्छा. सवाल है कि ये हमारा काम जो है ना, लोग समझते हैं बहुत ग्लैमरस है, हम डिटेक्टिव टाइप है, ब्लैक कोट ब्लैक हैट पहन के, गॉगल्स पहन के चलते हैं. ऐसा नहीं है, हमारा काम बहुत बोरिंग है. हमें बैठ के जो हजारों पन्ने घिसना पड़ता है, हर हर वर्ड केयरफुली पढ़ना पड़ता है,
उसको जोड़ के एक कंक्लूजन निकलना होता है. इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी बोरिंग जॉब. तो अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो तो वो करना बहुत मुश्किल है. तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई वॉलंटियर हो. जैसे हमें कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई जाके वहां बैठे, कुछ नहीं करना है, वो न्यूज़पेपर्स निकाले या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो निकाले, जाके हर रोज जाके 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाके उसका कॉपीज निकाल के ले आया, बात खत्म. तो ये भी बहुत मैकेनिकल कंट्रीब्यूशन है, बट बहुत क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन. Correct. So, sir, this is doable. There's, in fact, yesterday when I was talking to Anuj, on the chat only, there's a group called Declassify All Netaji Files on Telegram. So, in fact, they are also self-organized. They try to make memes, do research, and a lot, in fact. I don't know नहीं if वो you तो know about वो this. तो है कि आपका जो ये तो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, प्रथम वगैरह ये सब तो कर रहे हैं. मैंने कल ही तो मैं ज्वाइन किया, मैं वही अभी लोग तक. कर रहे हैं, तो वो दे आर अच्छा, डूइंग गुड वर्क. दे करेक्ट आर वेरी इंटेलिजेंट गाइस, यंग गाइस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी प्रोएक्टिव, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे शुड कंटिन्यू विद. करेक्ट. तो सो ऑल यही है योर अभी. रिक्वायरमेंट्स आर मेट फ्रॉम दिस फोरम सॉरी, कि आपको कम पड़ रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ अच्छा. ऑल योर रिसर्च रिक्वायरमेंट्स आर दे मेट विथ दिस फोरम कि आपको कम पड़ रहा है वर्कफोर्स. नहीं, रिसर्च तो अलग से करना पड़ता है. वो तो हमें जब जरूरत होता है, कुछ होता है तो मैं तो पोस्ट करता रहता हूँ फेसबुक में, ट्विटर में, कोई वॉलंटियर चाहिए कि यहाँ पे चले जाओ, वो सामान निकाल के ले आओ. जैसे टाटाज के आर्काइव्स में जाके कोई नेताजी के सुभाष बोस का जो 1928-29 या उसके बाद टाटा के साथ जो एसोसिएशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के ले आए, जाके कोई फोटोकॉपी करके ले आए या फोटो क्लिक करेक्ट, करके ले आए. तो जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं यूके में, जैसे है जब हम कॉनंड्रम लिख रहे थे, जब मैं ये किताब लिख रहा था, तो अचानक से मुझे एक फाइल की जरूरत पड़ी जो ब्रिटिश आर्काइव्स में है, हमारे नेशनल आर्काइव्स में नहीं है. तो फटाफट मैंने अपने दोस्त को फोन किया, वहां पे जाओ भाई, देख लो अगर हो सकता है. तो ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, प्रोफेशनल गाय. वो अपना काम धाम छोड़ के गया, वहां पे जाके खड़े होके सारे फोटो लिए, स्कैन किया अपने कैमरा से, पीडीएफ फाइल बना के मुझे 2 घंटे के अंदर भेज दिया. तो ऐसे जब दोस्त होते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट. करेक्ट. तो ये नेटवर्क हमें भारत के अंदर भी बनाना है. मैं तो तो थक ये गया हूँ पूछ के कि कौन जा सकता है. कोई वॉलंटियर चाहिए, नेशनल आर्काइव्स में जाओ, नेशनल लाइब्रेरी में जाओ, बॉम्बे में अगर है तो स्टेट आर्काइव्स में जाइए. बॉम्बे में नेताजी का इतना ज्यादा प्रेजेंस था, तो वहां पे पुराने न्यूज़पेपर्स ढूंढ निकालिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकालिए, आर्काइव्स में, महाराष्ट्र आर्काइव्स में देखिए क्या मिलता है नेताजी के ऊपर. तो ये वी नीड दोस काइंड ऑफ वॉलंटियर्स टू डिग आउट दोस डॉक्यूमेंट्स. सर अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम गाइड. ये हो गया कि अभी सोशल मीडिया के पर्टिकुलरली यंग जनरेशन का थोड़ा ये भी हो गया कि कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लग गया तो पहले उसका फोटो डालो ट्विटर में या फेसबुक पे. तो उसको इकट्ठा करके, एनालाइज करके, एसेस करके, रिसर्च प्रोडक्ट जो निकलेगा, वहां तक की पेशेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बट इट्स समथिंग दैट दे विल लर्न, दे विल डू, एंड एटलीस्ट आई मीन व्हाट वी आर आस्किंग इज हेल्प अस डू. करेक्ट. तो सर स्टेट आर्काइव्स में एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप कुछ उसको डिफाइन कर नहीं, पाएंगे वो तो क्या पता नहीं है कि ना. वो वहां जाके जाके. आप जैसे आर्काइव्स में गए, आर्काइव्स में जाके आप कीवर्ड सर्च कीजिए, आप लाइब्रेरियन से पूछिए, आर्काइविस्ट को जो है उनसे पूछिए कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स देखना है. तो वो आपको बताएंगे कि ये कार्ड है, ये कार्ड है, आप देख लो, ये फाइल है, ऐसे है, लिस्ट आपको कैटलॉग थमा देंगे. आप कैटलॉग से सिलेक्ट कर करके आप निकालो एक एक करके, और जितना हो सकता है फोटोकॉपी करो, फोटो ले लो. अगर अलाउ करते हैं, ज्यादातर आर्काइव्स में फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते, तो फोटोकॉपी अलाउ करते हैं, तो वो फोटोकॉपी अच्छा, आप कर सकते हैं. तो अच्छा. ये चीजें थोड़ा सा, वो तो हम गाइड कर देंगे. पहले कोई मिले तो जाके, कोई बोले तो हाथ खड़ा करके मैं जा तैयार हूँ सर मैं जाऊंगा आर्काइव ना, जाने के लिए. मैं जाऊंगा सर. तो बढ़िया है, बढ़िया और है. मैं लोगों को भी खड़ा करूंगा सर. मैं अपने जितने जान पहचान वाले बैक ग्रुप्स बना के एक आदमी आपका हर हफ्ते जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ सर. आपको खाली बताओ, बढ़िया है. आप लिस्ट दो क्या क्या चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. लिस्ट तो हमें खुद पता नहीं, कोई जाके पहले कैटलॉग ले आए स्टेट आर्काइव करेक्ट. से कि ठीक है, नेताजी के ऊपर ये फाइल्स है, सुभाष बोस के ऊपर ये फाइल्स है. तो वो ठीक है. फाइल्स, वो कैटलॉग अगर लिस्ट मिल गया तो हम बता सकते हैं कि भैया यहाँ से ये कॉपी कर. तो मैं नेक्स्ट आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा सर, जब भी मैं कैटलॉग ले आता हूँ फिर. श्योर,
बिल्कुल बढ़िया. Thank you Nikhil. Thank you. Bum bum. Devapam. Hi, sir. I recently got attached to your WhatsApp group by Joyanto last year. Actually, Ah, আপনার যদি মনে থাকে আমি একটা ফেরার সময় একটা ট্রিপ থেকে ফেরার সময় আই ওয়ান্টেড টু গো টু ফৈজাবাদ তো yes, correct. Yeah, I remember. তো স্যার আমার দুটো সিম্পল প্রশ্ন আছে এক নম্বর হচ্ছে যে যদিও আমি কানান্ড্রাম এখনো শেষ করতে পারিনি লেট মি কনফেস তো আই ইফ দ্যাট ইজ Okay. ডেল্ট ইন দেয়ার প্লিজ টেল মি অ্যান্ড আই উইল ওয়েট ফর মি টু ফর মাইসেলফ টু রিচ দোজ পেজেস বাট যে Hmm. আমি যখন স্পেসিফিক্যালি ওই জায়গাটায় ছিলাম যখন মানে ওনার বাসভবনে ছিলাম আমি যা দেখেছি বা যা শুনেছি বা গুপ্তার ঘাটে গিয়ে ইভেন একটা চায়ের দোকানের ছেলের কাছেও যা শুনতে পেয়েছি তার রেজাল্ট হচ্ছে খুব শিওর যে ওখানকার লোকেদের মনের মধ্যে অ্যাবসলিউটলি কোনো রকমের ডাউট নেই যে ভগবানজি নেতাজি ছিলেন মানে আমি চায়ের দোকানে যাকে Hmm. জিজ্ঞাসা করেছি সে বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওনাকে যখন আনা হয়েছিল তখন আমার দোকানে আমার দিদা মানে ঠাকুমা ঠাকুরদা বসতেন রাম মন্দিরের ভেতর দিয়ে ওনাকে আনা হয়েছিল কারোর সামনে দিয়ে আনা হয়নি সবাই জানতেন উনি নেতাজি পুলিশও জানতো ওই কারণে বাইরের আর কারুকে বিশেষ আসতে দেয়নি এই নিয়ে কি মিডিয়াতে আমার ঠাকুমার এই বেরিয়েছে ওই বেরিয়েছে এইসব মানে দে আর ভেরি শিওর আমি ওই গ্যাস এজেন্সি যেটা চলে আমি মিস্টার শক্তি সিং এর সাথে তখন উনি প্রেজেন্ট ছিলেন না সামহাও কিন্তু গ্যাস এজেন্সির যে জুনিয়র মোস্ট যে ছেলেটা তারও বক্তব্য হ্যাঁ হ্যাঁ উনি নেতাজি ছিলেন আমরা সবাই জানি অ্যান্ড অল অফ দ্যাট এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই লোক্যালিটিতে যখন তারপরে যেটা এক মাস দেড় মাস ধরে যে আপরোড ছিল বা যা ডেমনস্ট্রেশন হয়েছিল এবার আমি কানান্ডামে এটাও দেখেছি যে ওই লোকেশনে এরকমও হয়েছে যে ডিএসপি কখনো ইনভেস্টিগেট করতে গেছে এবং পরের দিন সকালে ডিএসপি ট্রান্সফার হয়ে গেছে এরকম ঘটনা ঘটেছে আর কি হয়তো এক্স্যাক্টলি ফাইজাবাদে নয় বাট বস্তিতে ঘটেছে বা এরকম ঘটেছে তো সেই ডেমনস্ট্রেশন কি করে মানে হাউ ডিড ই ডাই আ ন্যাচারাল ডেথ মানে ওয়াজ দ্য রাম মন্দির ইস্যু a issue that was created just to get this to a natural death এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মানে যেখানে Natural death. হ্যাঁ মানে ন্যাচারাল ডেথ মানে দ্য ইস্যু হ্যাড ইটস ওন ন্যাচারাল ডেথ ওই যে ডেমনস্ট্রেশন Acha, that way. That's correct. That is correct. I mean, that is what the sequence of events point to. The the when Lalita Bose went to the Lucknow bench of the Allahabad High Court, she by that time the movement regarding the ruckus around Bhagwanji's identity had almost become uncontrollable, and the district administration, the state administration were worried. Now Lalita Bose had gone and met the district administration and the police administration, even the chief minister. Now the chief minister advised her to go to the court, so people knew that she was going to go to the court. And right around that time, what happened? She went to the court and got an order on 10th February 1986. And just 10 days before that, the district court of Faizabad passed the order of allowing worship in the Mandir complex. So, and the amazing part, the very striking fact, which was noted by the Supreme Court and the Allahabad High Court later on, is that the person who filed this case for allowing worship in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid complex was in no way linked to the entire matter. Someone just comes from somewhere and files a case, and the court issues an order. District court issues an order, and immediately it creates a reaction. It creates a new situation which takes the focus away from the Bhagwanji issue, from the Gumnami Baba issue, and a new controversy is created. So this is very unlikely that it happened on its own and suddenly, without any design. Everything points to the fact that it was a deliberate act, because even the courts were surprised that how can somebody who is completely unrelated file a case and the district judge, the district court, pass such an order.
because there has to be That some too possibly antecedent. overnight or over a weekend, right? The order was No, passed whatever. overnight. I mean, that the details can be different, but the thing is that anybody filing a case there has to have some kind of antecedent, some kind of link with the case. I mean, I can't just go and file a case on a public issue somewhere in some corner, other corner of the country. When I am living in Telangana, I am living in Hyderabad. I can't go and file a case on some public issue in say, Sikkim. So there has to be some link. There has to be some connection. So without connection, how can somebody file a case and the district court pass an order on that? So all indications are that it was a very deliberate ploy to change the course of the discussion there, political discussion there. স্যার আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এটা একটুখানি মানে ইফ দিস গেটস পার্সোনাল প্লিজ ফিল ফ্রি টু বাইপাস দিস কিন্তু ইউ হ্যাভ বিন অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো ফর অনুজ সিন্স 2001 he has been following this. You also most probably have been following this around the same time, little bit earlier or little bit later. তো it has been almost what 20 21 22 years for both of you, যেখানে নেতাজি যাওয়ার পরে তার ফ্যামিলির ওপর যে লেভেলের সার্ভেলেন্স বা যা কিছু হয়েছিল, আপনাদের পার্সোনালি আপনাদের ওপরে দ্যাট ইউ আর এট আ ইস্যু ফর 20 21 22 ইয়ার্স ট্রাইং টু অ্যারাউজ মাস সর্ট অফ অ্যাওয়ারনেস অন আ পার্টিকুলার ইস্যু, আপনাদের ওপর আপনারা কি কখনো ফিল করেননি যে আপনাদের ওপর কোনো রকমের কোনো ইন্টেলিজেন্স বা কোনো রকমের কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভেলেন্স হয়েছে বিকজ ইউ আর ট্রাইং টু গেট আ ন্যারেটিভ অ্যাওয়ারনেস অ্যারাউন্ড আ ন্যারেটিভ which has never been supported by any of the governments of the free country? Well, if we know that we are under surveillance, if we know that the intelligence agencies are watching us, then I have to have a very poor opinion about those intelligence agencies. The first thing they would want to do is not to let us know what is going on. Okay. But I having said that, understand, but over a period of couple of decades and with the kind of aptitude you have on this subject, you must have got some inkling or something. Had there been well, the something thing like is that? that we don't care. The thing is that we don't care. We don't care. It doesn't matter. We don't care. But I will tell you one small incident what happened when this was in 2018, most probably, when Adhir Som's book was being released. His book Gumnami Baba, A Case History, was being released. So I was in Lucknow, and it was just after the book was released, not during the book release function, but just after the book was released. And it was actually, they had organized a function on Netaji's birth anniversary on 23rd January, and I was there with my family, and we were going to Guptar Ghat, and just to pay our respects, and also we usually go. I mean, casually we go. So while on my way, I get a phone call from. I won't take any name or any designation, but I get a phone call from one of the intelligence persons in the state that we know you are going there. So, what is the purpose of your visit? What do you want to do there? And what is the program and all those kind of stuff. So, that is a clear indicator that, I mean, wherever we go, and even when we do lectures in Kolkata and all, there are people who are sitting in the audience. They file their reports. We know. They tell us that we are here. We have to file a report. And this is a standard protocol, standard operational procedure. So, I mean, this is there. I mean, either we get worried or either we get concerned or we kind of ignore it. So we have chosen not to get, I mean, bothered by any of this. Let them do their job. Let us do our job. We will do our job. Let them do their job. So it's as long as we don't cross each other's path or interfere, it's fine. And we are not doing anything against the nation's interest. Rather, we are doing something for a public cause. So there is nothing to worry or nothing to be concerned about. We're quite proud of what we are doing. So it's fine. It's fine. Absolutely fine. Sir, আমার আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই বিকজ আই ওয়ান্ট টু গো থ্রু দ্য বুক ইন ইটসেলফ, কারণ কনান্ড্রাম ইন ইটসেলফ মানে ক্রোনোলজি লিখে লিখে অ্যাসেস করা ইন ইটসেলফ ইট ইজ মোর টাফ দ্যান মাই পোস্ট গ্রাজুয়েট ডেজার্টেশন.
So I am going through that process. কিন্তু আমি Sure. লাস্ট আমার টিপ্পনী হচ্ছে যে আমি এক্ষুনি নিখিলের সাথে আপনার ডিসকাশন শুনছিলাম। আই উইল কানেক্ট উইথ ইউ মোস্ট প্রবাবলি সেপারেটলি ইন টার্মস অফ আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতা নিয়ে যা বললেন। আই উইল কানেক্ট উইথ ইউ ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ ইফ আই ক্যান হেল্প ইউ ইন সাম ওয়ে। Great, great. You Do can be that. rest assured that if I am doing it, it won't get into Facebook or Twitter first. Okay. Thank you. Thank you. Thank So, you. so I'll right now stop and I'll just listen to the discussion. Okay. All right. Thank you, Devapal. Thank you so much. Hello, Dada. Ravi. Hi. Hi, I Badai. am Ravi from Gomo. From Momo. Initially, I thought this stream is in Bengali, so আমি একটু একটু বাংলা জানি দাদা, কিন্তু ভালো করে বলতে পারবো না, That's इसलिए absolutely. Feel free to talk in the language you are comfortable in. yeah, sure. So, I have been talking to you before also, so there's Yes. absolutely no problem. तो दादा अभी एक दो बार आपके अड्डा पर ही ये टॉपिक हैज बीन गोइंग राउंड्स अबाउट एमिली शेंकेल, Hanji. and personally Dada, I want to share an emotion with you regarding her. And first of all, I take her in very high esteem. In my eyes, she had a tremendous contribution in Netaji's life, and probably that had an impact that was not visible to the common man. But being a man, I can understand what role a woman plays in a man's life when it comes to taking hard decisions. So why I'm emotional is it's very painful to see. मैं नाम नहीं लूंगा कौन, लेकिन somebody from Bengal. It was a very old video, and I'll give you a hint. Probably you can connect. He's also written a book, and he has backed strongly about the Bhagwanji cause, though Anuj does not hold good views about him, but he's a good figure. He's a known figure in Bengal. So what he said basically was Anita is not Netaji's child. She is child of Colonel a Bridget. German soldier. Yeah, a German soldier. Yeah. So दादा आप ये देखिए ना कि मतलब this is the least thing you can do, that is maligning the dignity of a woman Exactly. whose contribution is so much, और वो भी वहां से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की भूमि से, जहाँ पे मतलब he used to call every woman, even starting from 3 2 3 years, or even a born girl right from the age up to 90 or 100, he used to call them माँ. तो ठाकुर रामकृष्ण के भूमि में यू आर मेलाइनिंग द डिग्निटी ऑफ अ वुमन. इसमें एक प्रसंग है दादा, आप देखेंगे कि वी ऑफ इन रामायण वी ऑफन टॉक अबाउट सीता एंड हर हार्डशिप्स, बट you people miss this point that even if she was in hardship, she was with her husband all that time. But उर्मिला जो थी, she was not with her husband, दो शी वॉज इन स्लीप. लेकिन आप उर्मिला के बारे में कोई बात नहीं करता. बहुत साल पहले मेरे एक टीचर ने मेरे को ये बोला था कि वी इग्नोर द सर्टेन फिगर्स whose contribution or whose sacrifice is immense, but somehow they don't catch the limelight. So also दादा देखिए ना, इसमें अनीता मैम is the daughter of Netaji or not is a मतलब कितना hardly hours job. You can do a DNA test, and it can be known that she is the daughter of Netaji or not. Am I right? No, you cannot. You cannot invade the privacy of an individual and ask for a No, DNA I'm test. not invading. If she is willing to shut the mouth of these people who are maligning her mother, then it's Well, possible, right? I mean, see, but her behavior has been kind of weird. Her Hmm. reactions have been kind of weird. It has not been normal. She has been so much of a fixed opinion, so Hmm. much influenced by Shishir Bose and the family, Hmm. that she refuses to see reason. She refuses to behave logically or talk logically. So Hmm. she is happy in that space of being called Netaji's daughter, and
saying things which she has been saying, which she has been trained to say. So I don't give much importance to that, much weightage to that. What we need to remember is that she was barely a few weeks old when Netaji left Germany. Right. So really, I mean, if anybody had formed a very mature opinion, if anybody had a considered opinion, और जिनको पता था, जिनको जानकारी थी नेताजी के बारे में, वो थी एमिली शेंक, नहीं ना कि अनीता पाल. अनीता पाल is as good as you or me. वो जो लोगों से, फैमिली के लोगों से बातें सुन के अपना नॉलेज डिराइव किया है या किताबें पढ़ के डिराइव किया है. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमने ज्यादा मेहनत किया है नेताजी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम अब दुनिया भर के आर्काइव्स यहाँ से वहां भागते रहे, डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए पढ़ते रहे, तो चर्चा करते रहे, तो हम ज्यादा ओपन माइंड और फ्री माइंड से नेताजी को स्टडी किया है, जो आई डोंट थिंक शी कैन क्लेम दैट. वो अपना एक फिक्स्ड आइडिया क्लोज्ड माइंड में उसी को लेकर चलते हैं. पर ये No, आप but जो बोल रहे हैं कि कोई उनको कोई रिसर्चर है, जो मैं जानता हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हम सहमत नहीं है, इससे हम सहमत नहीं है, ये तरीका नहीं है. देयर आर ग्रे एरियाज, क्वेश्चंस है, पर सबसे बड़ी बात है नेताजी का अपना हाथ से लिखा हुआ चिट्ठी. अगर किसी को उस right. चिट्ठी पे भरोसा नहीं है तो जाके उसका फोरेंसिक टेस्ट करा ले. कोई मिल ही जाएगा. कोलकाता तो कोई छोटा शहर नहीं है, वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जहाँ इतने सालों से उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं. आप उससे अच्छा है कि जाके हैंडराइटिंग एनालिसिस करा लीजिए. हमें कराना था नहीं भगवान जी का गुमनामी का, था हमने करा लिया, यूएस में करा लिया, इंडिया में करा लिया. तो ये लोग बैठ के कोलकाता में बैठे इतने सालों से बोले जा रहे हैं, तो व्हाई कांट दे डू द हैंडराइटिंग एनालिसिस? नहीं दादा, इसमें द ह्यूमन माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स, द साइकोलॉजी किक्स इन and you don't want to see the truth, you want to see what you believe is the truth. That kind of gives you solace. जैसे फॉर एग्जांपल अनीता मैम जो हैं, उसमें शी इज नॉट डिस्प्यूटिंग दैट नेताजी इज नॉट हर फादर. शी इज डिस्प्यूटिंग he died in a plane crash, right? She's claiming that he died in the plane crash. Yeah, because she I mean, she's not disputing, she's claiming that she's suspecting that rather she's suspecting that Netaji, and she's quite sure about it that he died in the plane crash, because मेरे opinion में दादा, that gives her a kind of calmness in her, कि ठीक है, my father came in my mother's life, I was born and ये बात तो passed सही away. है. उसको साइकोलॉजिकल, ये थोड़ा Rather साइकोलॉजिकल केस है, ये साइकोलॉजिकल केस है psychological जो calm अपने ये आप को के वो इट रिलीव्स हर कि उनको yes, ये correct, मानना नहीं sure. पड़ रहा है कि वो शायद जिंदा थे, क्या हो गया, yes, ये सब सोचना नहीं पड़ yes, रहा है. तो शी इज रिलीव and कि ठीक है, मर गए. she's outrightly rejecting the Russian theory also, because जो plane crash theory, that was an accident, and though as terrible as it may sound, but that gives her some kind of closure and calmness to her, and she can move on and focus to other things in life. So she will है not तो go. है, आई मीन है तो है. अभी एज आई सेड कि हाँ, इट नहीं रियली I'm डजंट talking about मैटर. no, absolutely Dada. No, when people are coming and saying things about ki he did not Anita ma'am is not accepting Gumnami Baba theory, so this is the probable reason, but my point was prior to that was that she is indeed the child of Netaji, and Netaji, Gumnami Baba also said in some of the conversations, and अभी जो आप जो अशोक गांगुली वो आए थे, उनको आप बोल रहे थे कि there is no legal marriage as such, there is no legal document as such. I don't think a person of such high moral standards like Netaji need any legal papers or a stamping by a government or society. नहीं, उससे भी ज्यादा entire ये his था life वहां he पे, was. उस टाइम पे जर्मनी में जो सिचुएशन था, वहां पे लीगल मैरिज वाज नॉट पॉसिबल. इट वाज नॉट लीगली अलाउड. तो और But इनको never in his पब्लिक भी नहीं करना था, इनको पब्लिक भी नहीं हाँ, करना था. तो अब जब but ऐसा है, yeah,
वो लोग तो उनको तो ये पता नहीं था ना कि 2 साल में जिंदगी कैसे बदल जाएगी और किस राइट। मोड़ पे जाना होगा, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हाँ। नाम्बियार के जैसे इंटरोगेशन रिपोर्ट से हमें पढ़ने को मिलता है कि he हम्म। he had plans to announce about the relationship after the war was over. तो ये हाँ। एंड हो सकता है। अनीता, एमिली, मैं उनको तो माँ एमिली बोलता हूँ, तो माँ एमिली जो थी वो तो शी वाज इन टच विद नेताजी फैमिली एंड हाँ एंड बिल्कुल। विद, अगर वो, इफ शी वाज, what why I call it sacrifice, Dada, because Netaji went away and probably she never married again, and No, she she raised never did. Emily. She, yeah. So that, She why raised do Anita with a you? lot of hardship and lot of Huh, hardship and lot of वो hardship, किया है। and he, hmm, and I heard somewhere, I read, अब मेरे को exactly नहीं याद आ रहा है, she was absolutely devout of Netaji's cause. तो ऐसे मतलब ऐसे माँ को आप कैसे, मतलब इट्स वेरी पेनफुल टू मी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि 2-3 राउंड नहीं, इन हुआ तो लोगों का जो आई विल कहना कम। है मैं वही बोलता हूँ, इनको इलॉजिकल है कि जो बोलते हैं मैं कि आता वो हूँ दादा शादी उसमें। नहीं किया, नेहरू का प्लान। तो मैं सीधी सी बात है, उनको बहुत सारे चीजें मिल जाता लाइफ में, बहुत आराम मिल जाता, हम्म। लग्जरी मिल जाता, हम्म। अगर वो ये मान लेते कि नेताजी का डेथ हो गया है। अगर नेहरू हाँ। गवर्नमेंट का प्लान होती तो वही बोलती ना कि उनका मौत हो गया है, आई एम अ विडो एंड हाँ। आई एक्सेप्ट द डेथ। वो जिंदगी के एंड आखिरी दिन तक वो लड़ते रहे उस बात से कि एंड नहीं मानता हूं मैं। she yes, and she probably never believed that Netaji died in the plane crash. That means she had some hint that Netaji is alive, and Netaji also kind of maintained a distance, as Anuj said in one of his talks, that Gumnami Baba maintained distance from her just for the safety concern. And you imagine the pain she has to go through, knowing fully well that her husband is alive and she is not near him. So I उससे भी respect, बड़ी I बात है, take. वो तो अगर ऐसे पता होता, अगर ऐसे पता Hmm, चलता कि इंडिया में है, hmm, जिंदा है, वो लोग hmm. क्या अपनी बेटी वहां बैठ सकती थी? वहां तो वो तो आ जाती इंडिया में, ना ढूंढने ना, के मैं लिए बोल आ रहा हूँ जाती। दादा कि she denied that. No, she came only once and she never came back. She knew that Netaji is alive because she did not agree for that Netaji died anywhere. Russian theory तो पहले था नहीं, सिर्फ प्लेन क्रैश थ्योरी था। I'll quickly wind up दादा। तो जो प्लेन क्रैश थ्योरी था, she never believed in it and she never believed till her death in 96. So probably my gut feeling is she knew about Netaji is alive and she kept mum just to make sure whatever Gumnami Baba or Bhagwan ji She was doing, sensed he that he should was be able. alive somewhere. She did not Hmm, have the hmm, knowledge, she did not have the hmm. information, but she sensed। जो कनंड्रम में And I एक think, हमने hmm, फोटोग्राफ डाला है, hmm, उनका ऑटोग्राफ का एक कॉपी डाला है, पिक्चर डाला है, जो आनंद uh, बाजार के रिपोर्टर hmm, को उन्होंने दिया था। आई थिंक uh-huh, इट वाज 1956 और समथिंग। तो वो लिख रहा है uh-huh. कि wherever he is, may his dream be fulfilled। तो ऐसे तो कोई मरे हुए Absolutely, that is what. आदमी के बारे में नहीं लिखते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, शी न्यू। एंड अब मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि शी, दो शी वाज अ फॉरेनर, दिस इज somehow superhuman according to me, even in It those has to be ages, respected, because she European has to be culture, हाँ, respected, she has to be given the absolutely, due she has respect। to be given highest respect. मैं, I think we should all start calling her Ma Emily Schenkel and stop this nonsense of maligning the dignity of a woman who has given so much to a person who is the prime reason for our independence. तो दादा, लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जो सज्जन ये बोल रहा है ना कि मतलब ही व्हाट ही इज ट्राइंग टू बेसिकली प्रूव इज दैट नेताजी वाज a sannyasi, and so a sannyasi is not supposed to, get into this worldly act, you know what I mean. But there are sannyasi, वो क्या करते हैं, उनके they have very narrow view about being a sannyasi. They, when you ask them, they'll tell you Swami Vivekananda कि लंदन में गए थे, वुमन आस्क्ड हिम टू मैरी एंड शी टोल्ड and have a kid that will have quality as Vivekananda. So Vivekananda told, you can treat me as your own kid and I'll be happy to call you my mother. So basically, their idea of sannyasi is not getting married. But we have umpteen examples of sannyasis getting married and having kids, but they don't involve in those, I mean, these worldly acts that much and continue with their sadhana.
अभी एग्जांपल तो सदगुरु, people don't, I mean, some people are नहीं devout, नहीं, some ये people बात are है not. सही रवि, ये this is Even digressing, Sadhguru has a but the thing daughter, you is know. that's fine, there are different kinds of people there and Subhash Bose was not a sannyasi, he had not taken sannyas, and if he had He, a relationship hmm. that is perfectly natural, logical and justifiable, and it does And not need to be justified. he was And never if he it, was never a womanizer after all. And so that's also the thing. there are not multiple women calling, saying that this kid or this person is Netaji's नहीं, वो सब छोड़ child or दीजिए, वो something सब like that. those are irrelevant Yeah, points. no, Those are but I'm saying irrelevant this points. is definitely, That's definitely possible. Definitely possible no, that I take your point. I sannyasi. take your point, and I Hmm, agree with it that Emilia Schenkel hmm, needs to be given due respect. And hmm, I mean, there is nothing that denies the fact of their relationship. Well, hmm, it might not have hmm, been a legal marriage, but it was a hmm. partnership, a relationship, and there is no doubt about Hmm. that. And if And anybody has any he doubt about had it, very high let them morals. prove Yes, the yes. well. Yeah, Okay, Dada. yes, but we should not sit on judgment on her. But Okay, yes, okay, Dada. Let's see, end it here. Second question I have is, I think I've been following you on Twitter, and some time back you posted an order from the Home Ministry that said that on 23rd January, certain program remembering Netaji should not be telecasted on All India Radio, Kolkata. That was at the behest that of was in Sadar. 1949. That was in 1949, Yes, 48 and Sardar Patel had 49, when directly instructed. Sardar Patel had Hmm, said hmm. that there will be no special programs on Netaji in Absolutely. Netaji's But memory. yeah, going back to one of the videos of Professor Kapil Kumar, he claims that Sardar Patel wanted the INA soldiers back in the army, and Nehru vetoed it. No, 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 So no, then these views are not no, 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 concurrent. no. We have absolutely Sardar Patel's own statement and quote where he was Hmm, gloating over the fact that I did hmm. not allow the INS soldiers to be taken back into the army. So, So in fact, why don't you refute, confront Kapil Kumar? Means he's actually, I mean, I don't need to. the Why should I? I mean, we're all working together. I did not know Kapil sir had said this. He might Mhm. have said casually, or I don't know what he said exactly. But No, but I Sardar take Patel's his story word is very seriously, clear. Dada. That's no, absolutely, and I that don't know. I haven't come I. across. I haven't come across, and I don't have to Hmm. confront Kapil sir. I can always discuss it with him. I can always No, give no, him but the see, facts which I have got. Dada, So, Dada, the thing is, if you say something emotional about Netaji, like he was a Superman, थोड़े टाइम के लिए मैं मान भी लूंगा कि यू आर बायस्ड बिकॉज यू हैव डिवोटेड सो मच टाइम एंड आपने दूसरों को पढ़ा नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग सो एंड सो अबाउट नेताजी. बट ही इज अ ट्रेन्ड हिस्टोरियन, वो तो इग्नू में थे एंड मुझे बेसिकली पता इज नहीं है, ट्राइंग टू. Ravi. I haven't seen. I will check with it. I will check with him. I will ask him if he has आई said विल that. मैसेज यू दैट हाँ, अबाउट दैट बिकॉज but सेकेंड थिंग आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ पटेल बिकॉज आपको एक याद है, एक बच्चा आपके स्ट्रीम में आया था दादा, वो आप लोगों को ब्लेम कर रहा था कि ही वाज एक्यूजिंग यू टू क्रिएट रिफ्ट्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ national movement. So in that video, I was listening to that guy carefully. He told that some BHU में या यूपी में कहीं आए थे, and Patel had come and he was justifying the partition, that it was inevitable. I think you and Anuj had cornered him about that issue, that उसमें कपिल the सर भी leaders थे, of that time. उस शो में कपिल Hmm, सर भी थे, प्रेजेंट थे, बट hmm, hmm. हाँ तो ठीक है. आई मीन And ऑफ then कोर्स that सदर सदर we are missing the point. The person who is justifying the partition, his statue is called the Statue of Unity. ये अब पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो नहीं, पॉलिटिक्स है. आप क्या बोलते हैं दादा इसमें? आप आई डोंट. मैं तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, मुझे जो बोलना होता है मैं साफ बोलता हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है नहीं. तो हम्म, सरदार हम्म, पटेल एंड पंडित नेहरू बोथ accepted partition at the same time. They accepted dominion हम्म, status at the same time. तो कोई हम्म, खास फर्क तो है नहीं उसमें. तो मैं अलग हम्म, से देखने को तैयार नहीं हूँ कि सरदार पटेल कुछ और थे और पंडित नेहरू कुछ और थे. दोनों ही एक जैसे थे. They, all these हम्म, decisions as far as Netaji Subhash Chandra Bose was concerned, they were in agreement. And यस. सरदार पटेल तो हमने तो लेटर प्रोड्यूस किया है जो हम्म, प्रोविंसेस के प्रीमियर्स को लिख रहे थे कि आप हम्म, तारीफ करो, आईएनए के सोल्जर्स की तारीफ करो, उनको डिफेंड करो, पर ये ध्यान रखना
ये उनके लीडर की तारीफ ना करें। His नहीं leader तो should not be, एंड their वो leader should not be praised. और चंदा उठाया था उस टाइम पे सब सारे प्रोविंसेस से आईने के नाम पे, एंड दैट वाज अंडर द आईने लीडरशिप रिलीफ ऑफ सरदार कमेटी, तो पटेल। वो अब पता नहीं है, इतना साल हो गए, इतने डिकेड्स हो गए, कहाँ क्या हुआ है पता नहीं है। पर बाद में जो एमिली शंकर के अनिता पाप के लिए जो वो बना, जो ट्रस्ट फंड बनाया पंडित नेहरू और डॉक्टर विधान चंद्र राय मिलके, उसमें जो सीड मनी गया था उसमें आया था पैसा, आईने रिलीफ फंड के थोड़ा बहुत पैसा उसमें आया था। पर आईने रिलीफ फंड में कितना एग्जैक्टली पैसा रेज किया था और एग्जैक्टली कहाँ कहाँ खर्च हुआ था, इसका डिटेल तो किसी को भी पता नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मे बी हाँ एआईसीसी नहीं, के फाइल्स में होंगे कहीं पे, अनुज इज तो वो अनुज इज अनुज इज एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने कांग्रेस को मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा किया, पैसा इकट्ठा किया, बिल्कुल they taking the name of Netaji, and they were being so ungrateful. एक बार see 45 में कोई कपिल एजेंडा सरकार, नहीं था, कांग्रेस का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। राइट, वो तो अगर आईएनए ट्रायल्स नहीं आर्काइव होते से, तो वो लोग वहीं पे खत्म हो जाते। आर्काइव से सर, दादा वो आर्काइव से तो वो भी आ गया है ना डिटेल, जो अनुज बोल रहे थे कि वो ब्लैक गाउन पहनना वो सब तो इट इज रिटन इन इंटेलिजेंस फाइल ऑल्सो। इफ some people say, and I if I play devil's advocate here, I would say कि नहीं, why you are going by British documents? Please understand, those are not uh, books that has been written for propaganda value. Those are intelligence files, and if a government is ruling a country, the intelligence file will contain only and only truth, because based on that they are going to नॉट make ऑलवेज, strategies, right? नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंस फाइल्स में इंटेलिजेंस इनपुट्स भी काफी Hmm. गलत हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि Hmm. हर रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट होता है, कभी तो फील्ड लेवल पे डिलिबरेटली ज्यादा इंटेलिजेंस झूठ होता है। लिखेंगे। आप बात सुन लिए मेरी, आपसे डेलिबरेट, सवाल जब किया है तो जवाब हाँ, सुन लीजिए। तो फील्ड ओके ओके दादा। इनपुट्स होते हैं, फील्ड रिपोर्टर्स आते हैं, फील्ड रिपोर्ट जो भेजते हैं, वहां हमेशा हर चीज एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे नेताजी के हम्म घर छोड़ के बाहर जाने का जो फील्ड रिपोर्ट जो आया था, ओएसएस उस टाइम पे था, सीआईए बना नहीं था, तो वहां पे कोई हम्म चोर पकड़ा गया और तो उसने हम्म जाके एक गॉसिप वहां पे थाने में दर्ज करा दिया कि ऐसा नेताजी जाने से पहले कोई सरदार जी खड़े थे और नेताजी सरदार जी के वेश में निकल के चले गए। तो ये हुआ ना हम्म एक छोटा सा इनपुट, तो ये सही, ये इंटेलिजेंस फाइल में ही आया है, पर ये सही नहीं है। हम्म। सही वो होता है कि द- जब 10 सोर्सेस से मिलके एक फाइनल रिपोर्ट बनाया जाता है और उस रिपोर्ट को पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर के पास भेजा जाता है फॉर एक्शन। तो ये जो हरी वधवार की जो कहानी है, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जा रहा है वायसराय के पास फॉर एक्शन, फॉर डिसीजन। तो वो हम्म। एक्शनेबल रिपोर्ट है, उसमें गलती नहीं होती। गलतियां होती है, वही बोल डिफरेंट रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होते हैं, गलतियां होती है। इसमें जो नहीं वो एक्शनेबल है, तो, जो हायर अथॉरिटी के पास है, उसमें गलती नहीं होती। हाँ, नहीं वही दादा, जो इनपुट जैसे किसी रैंडम आदमी कोई इनपुट दिया, वो तो वो रिपोर्ट तो नहीं है ना जो अनुज कोट कर रहे हैं। सम हायर अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट इज राइटिंग दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन विच This दे is विल एनालाइज इट। published in the Transfer of Power volumes published by the हाँ। British government from the Her Majesty's हम्म Stationery Office with the full हम्म government seal। इसमें झूठ बात तो कम से कम नहीं लिखी गई है। हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज वो झूठ लिख के फिर अपना नुकसान क्यों करेंगे। एंड अगर आप देखें दादा, तो इंटेलिजेंस फाइल को ये सोच कर नहीं लिखता है कि हाँ 100 साल बाद ये क्लासीफाई होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। तो वही है। नहीं, दादा एक ऑब्वियसली और लास्ट, राइट, एक लास्ट क्वेश्चन दादा इसमें कि द Alfred Wag, I think, was the first journalist who reported that we saw Netaji in Saigon. So, what exactly was his intention? मतलब was he there specifically looking for Netaji, or no, he he was was he was a reporting? journalist. He was a journalist. Hmm, He was a hmm, journalist. He used to report for number. He used to write in a number of newspapers and magazines. तो शिकागो ट्रिब्यून में जैसे hmm, लिखते थे, हाँ काफी हाँ, सारे इंडिपेंडेंटली बाकी सारे न्यूज़पेपर्स में भी लिखते थे। तो उनको hmm, वो जब गए वहां पे साउथ ईस्ट एशिया hmm, में, ही वाज मूविंग अलोंग विद द अलाइड फोर्सेस, मिलिट्री के साथ इनग्रेड थे। hmm, तो उस टाइम पे जो वो hmm, था कि जब रिकवर रिकैप्चर करने के लिए अलाइड फोर्स साउथ ईस्ट एशिया में घुस रहे हैं, सिंगापुर में जा रहे हैं, जापान में hmm, जा रहे हैं,
बर्मा, थाईलैंड, यहाँ सब घुस रहे हैं, तो इनके साथ साथ एक टीम ऑफ रिपोर्टर्स भी ट्रैवल करते हैं। अल्फ्रेड वॉग वाज वन ऑफ देम। तो उनको Right. वहां से फील्ड से जो जो इनपुट मिला, जो इंफॉर्मेशन मिला, he tried to verify it and he was satisfied that he had been able to verify certain things. Okay. वो वापस आके he reported to Jawaharlal Nehru and Sarath Chandra Bose. Okay. So, Dada, what I was thinking is, perhaps the claim of Gumnami Baba that Hiroshima and Nagasaki were bombed to eliminate him was true because then after bombing, these two guys were looking for Netaji, and to their surprise, they found out that Netaji is alive. नहीं नहीं, So I thought ऐसा if that होता has तो some पूरा connection. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है फॉर द एटॉमिक बॉम्ब्स, उसमें कहीं नेताजी का वो फिगर नहीं होता है। और हिरोशिमा, डॉक्यूमेंट नागासाकी डिक्लासिफाई हुए। वर नॉट द ओनली, कि ऐसा नहीं कि ये दोनों शहर को पकड़ के यहीं पे बॉम्ब कर दिया। These two cities were selected after lot of deliberation, lot of consultation and discussion. रिसर्च। उसमें नेताजी वाला इशू है नहीं, उसमें there is no angle like that. ठीक है दादा, ओके। और एक निखिल ठाकुर आए थे दादा अभी थोड़ा टाइम पहले। It was so wonderful to hear him. We need people like him. Or he was speaking my mind, word to word. I can vouch for that. The same. जो कुछ बोले वो सब I agree. I was backstage listening to him, and it was so wonderful to hear कि people have this critical reasoning or critical mind की आंख बंद करके एक लीडर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। People need to examine critically योगी जी also. So that was wonderful to hear. और दादा अभी बात में मालूम पड़ा कि 25 years you lived in Delhi. So the energy and that passion and dedication people see in you, to me you look like 25 years old. तो अभी वो चीज आपने मेरा शैटर कर दिया, वो मेरा व्यू कि you are that old. But yeah, I No, think I'm not that old, but I'm not even that young. I'm not नहीं that नहीं, old, but and you are neither am I that young. absolutely मैं 25. इतना भी बुजुर्ग I नहीं can do हूँ। my math. I can do my math, Dada, but I can vouch for this, and many people I think will agree that you have the energy and enthusiasm of a 25-year-old. So चलिए वो बना Thank रहे, you. और hope to see you in future also. So दादा अनेक धन्यवाद, thank you so Thank much. you, Ravi. अगले में भी आना, बात करेंगे। Thank you. প্রশান্ত, হ্যাঁ স্যার, আমি হরিদেবপুর থেকে বলছি, কলকাতা। আমার দুটো প্রশ্ন আছে। এক, কোনানগ্রামটা জাস্ট পড়া শেষ করেছি, এখানে অনেকবার সন্তোষ ভট্টাচার্যের রেফারেন্স এসছে। ইনি কি যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি চ্যান্সেলর ছিলেন এবং কংগ্রেসের হয়ে 1991-এ মনে হয় যাদবপুর দিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, ইনি কি সেই ব্যক্তি না অন্য সন্তোষ ভট্টাচার্য? না, অন্য সন্তোষ ভট্টাচার্য। অন্য, আচ্ছা। আর সেকেন্ড একটা, যেটা কয়েক জায়গায় আপনার বই না অন্য জায়গায় রেফারেন্স পেয়েছি, যে 1945 এই 18 আগস্টের পরও 2-3 বার ওনার নেতাজির রেডিও বার্তা শোনা গেছিল। এটা কতটা অথেন্টিক? অথেন্টিক মানে কি, কেউ ক্লেম করেছেন, এবার রেডিও শুনেছেন, কেউ ক্লেম করেছেন, একজন রেডিও মনিটর, রেডিও অপারেটর যিনি শুনেছেন, যিনি বেঙ্গল গভর্নর অফিসে রেডিও মনিটর ছিলেন, উনি শুনেছেন, he heard the message which he thought was Netaji speaking over the radio. Then we get from letters from Shishir Bose to Omeo Bose in around 1946 that announcements being made in some channel, he couldn't specify which channel it was, that there was an announcement continuously being made that Netaji Subhash Chandra Bose will speak to. So he wrote to Omeo Bose that I have been hearing this announcement for a long time now, and I don't know where it is coming from and whether there is any truth behind it. So yes, there were reports. Of course, there were reports, but nobody has been able to produce any recording of any such transmission. ठीक है, thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, বাই।
হ্যালো স্যার। Aniket, hello. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমি কলকাতা দিয়ে বলছি স্যার। Hmm. Aniket, because we have people from different parts of the country, can I request you to either speak in English or Hindi? আমি ওকে। বাংলা আলাদা করে করবো একটা সেশন, বাট since I did not announce it for a Bengali only session tonight, it will be nice ওকে। if you can. ওকে স্যার, few days back I saw a movie 8 by 12. It was on Binoy Badul Dinesh. Correct. How It's is it? I it's haven't seen it. it's a wonderful movie, sir. It's a wonderful movie. So I've watched Okay. that, sir. So in the movie they have used artistic license, but I wanted to ask what they were showing, the families, the way the families were tortured of the revolutionaries. Was it true? Well, there is a large amount of truth. I don't know exactly what they've shown in the movie, but there is large amount of truth in that. There were people were picked up, they were tortured inhumanly in police custody, and revolutionaries and their families, of course, yes, and there were social measures also. I mean, there were various ways of torture. There was not only physical torture, there was psychological and social torture as well. So yes, I mean, there's a large amount of truth in that. Acha, sir. Sir, after the transfer of power, sir, the cases against the revolutionaries, were they withdrawn officially, or sir, it was just closed? No, all those became infructuous, huh? Because it was those cases were uh, registered by the British government, and the British government didn't exist anymore. So there was no question of case of any war against the emperor or treason against the Okay. emperor. So there was, I mean, India when India was India had her own government, so there was no question of having those cases. Anyway, most of the revolutionaries by that time had been released. Uh, I mean, political prisoners or revolutionaries, most of them, unless the new government wanted to continue to keep some of them in prison. So otherwise, most of them were released and cases were disposed of. And Pavitra Mohan Roy was one of them. Pavitra Mohan Roy was uh, given the death sentence, but he was released in towards the end of 1946. First, his death sentence was commuted to transportation for life. Then he was released, so he didn't have to go through the sentence. And sir, the last question is, sir. Sir, I wanted to ask, sir. Uh, Sir, during World War II, sir, Indian soldiers were serving in the Burma front. Sir, whom were they actually fighting? Were they fighting the INA soldiers, or were they fighting the Japanese? Because records are not very clear. Sir, like, sir, the Assam regiment made a song. It's funny, but Baddu Ram ka something. Were they killing Japanese soldiers, or were they killing INA soldiers? Records are not very clear. It's becoming No, very it can't be ambiguous at times. that clear. It can't be that clear because they were It allied can be. armies, and there were small units fighting. The INA was not too big in number, too large in number, so they were split into small units, and each unit was attached to a team of the Japanese army. So they were fighting together, and it's not that all of them will be mixed and going for a charge. So in one sector there is the INA, in another sector there is the Japanese, but they're allied armies. So the Bahadur group is moving along with the Japanese army. Sometimes the special forces would move ahead of the Japanese and INA allied armies and set up a camp or do the groundwork, get information, do sabotage work. So it's not possible to demarcate clearly कि आज मैंने जापानीज को मारा ये कल मैंने आईनो को मारा ऐसा नहीं हो सकता. So they were fighting. They were, of course, I mean, in certain sectors they were fighting the INA. In certain sectors they were fighting the Japanese. But they are the same allied army. So when this, and at that time when they on these things were being recorded, INA was not recognized by the British government, or they were not publicly talking about INA. Even the very Okay. existence was very grudging, reluctant, and I mean, they didn't want to give it that recognition.
It was a ragtag army. For them, it was a ragtag army, and they were traitors. For the British government, the INA were traitors. So it's not always possible to differentiate exactly who they were fighting. Okay. Okay. Right? Thank you. Okay. Thank you. Thank you for joining. Thank you for Thank you, joining. sir. For one queries, Yes, you are on screen. Please carry on. বলছি আমি একটা চিঠি দেখেছি মোস্ট পসিবল তোমাদের বইতেই 64-এ শিশির বোস দিল্লিকে লিখছে অ্যাবাউট দ্য গ্রেট এসকেপ অফ নেতাজি। তাই সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে কি শিশির বোস গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা কি সত্যি হয়? তোমাদের ফাইন্ডিং What did Shishir Bose write in that letter in 1960? Please let me know. আমার যতদূর মনে আছে না, I mean, যারা এই কথাগুলো বলেছে, I know there are a lot of people. There is a group in Kolkata who specialize in distorting facts, in distorting official. I'm sorry, but they don't. No. তোমাদের নেই। We don't write such stuff. These are written by people who don't either understand English and cannot interpret what is written. আমি তোমাদের থেকে আমি অনেক বেশি ওয়েটেজ দিই তোমাদের। না আমি জানি আপনি কোথায় পড়েছেন। আমি জানি এক্স্যাক্টলি। আমি সেটা আপনার কর্ডটা গোলমাল করছে, কথা কেটে যাচ্ছে। কম্পিউটার কর্ডটা ঠিক আর একবার লাগে। আমি জিজ্ঞেস করছি যে ইজ ইট অলরাইট নাও? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়েস। এক মিনিট। So while I wait for Mr. Ganguly to come back, here's a reminder again. Do help, come forward. We do need more help from you, resources. The ticker is there. Under the description of the video, there is ways of doing UPI and bank transfer. We do need your help. So feel free to come forward. It's completely voluntary, no tension, no pressure, but it will be very helpful if you can. All of them. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please carry on. আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে তোমাদের ফাইন্ডিংসটা কি? শিশির বোসের চালিয়ে বাবারটা ওটা ট্রু? Yes, it is true that Shishir Bose drove Netaji and took him out. I have not come across any evidence to suggest otherwise. This thing which you just mentioned, I know who were the people. Shishir Bose wrote that letter to the government of India to help him spot those places in Pakistan and Afghanistan through which Netaji went. Now, Shishir Bose drove Netaji till Burari, till Ashok Bose's house. He did not drive Netaji to Afghanistan. So what exactly happened in Pakistan and Afghanistan, he did not know. So for that reason, he wanted the government of India's help. তাহলে I mean, after independence 47, before joining Congress in 60s, why he didn't spell out that? He didn't spell out what? That নিয়ে গেছে ঘটনাটা। No, he personally did not. And see, Shishir Bose made up his mind in 1965. ঠিক আছে? In 1965, he made up his mind that Netaji died in the plane crash. So till 1965, there was no question of him talking about it, because all of them, which again I would request you to read the biography. You must read it because all this information is there. So Dijen Bose told in front of Khosla Commission that all the nephews and nieces who were involved in that exercise in his escape, they were under oath of secrecy, never to talk about it. Yeah, true. Okay, so even Dijen Bose for the first time spoke about it in 1972-73, not before that. Okay, naturally it was a, I mean, oath, secrecy oath. ইলা
Dijan Bose, everybody took like that. That is true. Exactly. But আমি যেটা বলছি আমার একটা খটকা লাগে কেন, আফটার জয়নিং কংগ্রেস, I mean, তারপরে ওনার After joining Congress, he was a different person. Shishir Bose was a different person after joining Congress. So then he became a congressman, and I mean, আমি যতদূর জানি এই যে গাড়ি চালিয়ে ব্যাপারটা, এটা তো উনি বললেন তারপরে, কংগ্রেসে জয়েন করার পরে। that is fine, but it has, see, it doesn't matter what Shishir Bose himself is saying. As I just, when I spoke to you last time, I told you one simple principle, that to verify whether one claim is true or not, see whether you can corroborate it from different sources. So what Shishir Bose is saying is being corroborated by Dijan Bose, and Dijan Bose was not friendly towards Shishir Bose. No. It is Dijan Bose being corroborated by Ashok Bose. Dijan Bose, Ila, they were different pedigree. No doubt in that. So they were not friendly towards Shishir. So they have corroborated, they have confirmed. Ashok Bose has confirmed. So I mean, there is, I don't see any reason to doubt the story by itself. So you can question Shishir Bose's other activities, but not this one. আসলে আমাদের in our childhood days, we are witness when this Netaji Trust অমিয় বোসকে সরিয়ে দিয়ে এই শিশির বোস ফ্যামিলি নিল। হ্যাঁ, I mean, এগুলোর থেকে ডাউট গুলো আসে আর আমাদের মনে খটকাটা আসে। They were of the same feathers. It wouldn't have made any difference who came, who took, who came to power. They are of the same feather. Same thing would have happened. Exactly. Actually, so, I mean, there, I do not, I've got no hesitation to say that his major enemy is his family. Absolutely. Okay, thank you so much. Thank you. Good night. Thank you. ভালো থেকো। খেতে You don't mind, huh? Okay. No, all no, the no best. problem. Okay, all the best. Definitely তোমরা আবার যখন কলকাতায় আবার নেক্সট আসার প্রোগ্রাম কবে জানাবো। We will let you know. I will inform your daughter. I mean, I don't think you are active on social media, so I will inform your daughter. So that you can হোয়াটসঅ্যাপে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনফ্যাক্ট নেতাজিকে নিয়ে একটা কবিতাও তোমাকে লিখে পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো তুমি যদি আমাকে ওখানে একটু জানাও যে কলকাতা আসবো, শোগুলো দেখা হয় না কারণ আমি ব্যস্ত থাকি। একটুখানি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট একটা মেসেজ করে দাও যে তোমাদের নেক্সট লাইভ শো কবে, তাহলে আমি I'll be obliged. Okay, all the blessings. Okay, all the blessings. Thank you. Pratham. Hello, sir. Namaste. Namaste. Batao. How are you, sir? Very well. Batao. क्या चल सर रहा आपका है? कैसा गया लेक्चर वगैरह? लेक्चर्स तो काफी अच्छा गया। अब इस फेज में अभी जो गए थे 3-4 दिन के लिए, ऑडियंस उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इट वाज गुड, अच्छा था। दुर्गापुर में काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मतलब एक काफी यंग लड़के, 3-4 लड़के, वो क्लब भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, अपने दम पे 3-4 लड़के एक साथ होके पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। तो इट वाज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी नाइसली डन, अच्छा था। कोलकाता में भी 2-3 और किए तो इट वाज नाइस, गुड रिस्पांस, काफी इन्वॉल्वमेंट था, इमोशन था, बट अच्छा होता, अच्छा लगता है कि ऑडियंस थोड़ा और बड़ा हो, तो सामने अगर 400-500 लोग बैठे हैं तो बात करने में और ही मजा आता है। कोई छोटा मोटा वैसे मीडिया कवरेज नहीं हुआ कि कहीं लोकल न्यूज़पेपर में या लोकल न्यूज में वो करते हैं, लोकल टीवी चैनल में, लोकल रीजनल उसमें जो होता है एकदम लोकल लेवल न्यूज़पेपर में, फिर वो बात करते हैं, मतलब केबल नेटवर्क जो होता है उसमें वो सारे थोड़ा बहुत कवर किया है, दिखा है, बट कोलकाता में नहीं होता। ये दुर्गापुर में होता है। दुर्गापुर इज अ नाइस प्लेस फॉर दैट। कोलकाता इज टू बिग। So today's topic is, will government ever bring out the truth? I think. तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? Sir, we have to start with you. Are you optimistic or not?
I don't trust politicians. I trust people. तो हाँ जब लोग एक साथ एकजुट होके इकट्ठा होके दबाव डालेंगे, तो ऐसा कोई पार्टी या सरकार तो है नहीं जो उसको इग्नोर कर सके। तो आई डोंट बिलीव इन कि अभी बीजेपी है तो कर देंगे, मोदी जी है तो कर देंगे, योगी जी है तो कर देंगे। उनको भी दे आर ऑल पॉलिटिशियंस, दे आर वर्किंग इन नेशनल इंटरेस्ट, व्हिच इज आई एग्री एंड आई सपोर्ट देम। बट ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि उनको नेताजी से कुछ खास ज्यादा प्यार है कि वो इतना बड़ा एक इशू को ऐसे ही खुलासा कर देंगे। आई डोंट थिंक। ऐसे ही खुलासा तो कर उनको भी अपना राजनीति जो है, अपना पॉलिटिक्स का जो है, वहां पे भी उनको भी फायदा देखना चाहिए कि इट मींस वोट्स, इट मींस पॉपुलर सपोर्ट, इट मींस इलेक्शन। अगर आई वांटेड टू स्टार्ट दिस कैंपेन बट देन इट वुड हैव बैकफायर्ड, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा खींच लिया पीछे कि मैंने शुरू किया था उसको कि नो म्यूजियम नो वोट उत्तर प्रदेश में। बट देन इट वुड हैव क्लैश विद लार्जर इश्यूज, देयर आर अदर इश्यूज। लॉजिक। हाँ, तो उस यही लोगों ने भी तो बोला, मैंने देखा था, लोगों ने बोला था आप ऐसे नहीं कर सकते, नो नो म्यूजियम नो वोट। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का कोई परवाह नहीं है। बट द थिंग इज दैट आई रियलाइज दैट उनका जो पॉलिटिक्स है, ये हमारी कमी है कि हमने अभी तक इसको इलेक्टोरल इशू बना नहीं पाए। तो ये जब बन जाएगा तो लेटेस्ट, अभी टाइम है, बिल्डअप हो रहा है, टेम्पो बिल्डअप हो रहा है। तो अभी थोड़ा लोग ज्यादा बिजी है कश्मीर फाइल्स लेके। तो वहां से जब थोड़ा सा नजर हटेगा, वापस आएंगे। बिल्डअप तो हो ही रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम तो कर ही रहे हैं। All we need to do is to reach out more and more people, more and more influencers. बट सर अगर गवर्नमेंट, अगर ऐसा करना है कि गवर्नमेंट ट्रुथ बताए, तो बहुत ही ज्यादा इमेंस प्रेशर चाहिए, इमेंस प्रेशर। अब रियलाइज हो रही है ये बात। अब देखो ना, कश्मीर फाइल्स का जो रिएक्शन आ रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार उसको टैक्स फ्री कर रही है। अब शिवराज सिंह चौहान ने एक म्यूजियम का अनाउंसमेंट करने के लिए लैंड अलॉट कर दिया, फ्री का लैंड दे दिया। तो कर तो रहे ना, दे आर रिस्पॉन्डिंग। तो जब पब्लिक डिमांड होता है दे रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्स कैसे आएगा, कितना एक्सटेंड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें पता नहीं है, पर रिस्पॉन्स तो जरूर आएगा। तो वो रिस्पॉन्स लाने के लिए भी हमें अपना कैंपेन को थोड़ा एक दूसरे लेवल पे ले जाना होगा, एक उसका टेम्पो थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक और लोगों को, हम तो सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं। अब ये है हमारा प्रॉब्लम, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बेंचमार्क लेते हैं 2005 साल की, जब कोई बात नहीं करता था। तो अब उसके मुकाबले अभी बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत हो रहा है। बट वो गलत है। अभी गलत है, वो पैरामीटर, वो कंपैरिजन गलत है। गलत इसलिए है अच्छा। कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि कितने लोग, तुम देखो, कश्मीर फाइल से लेकर अपना आवाज उठा रहे हैं, पर हमारे मुद्दे को लेकर उतना लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब हमारा कैंपेनिंग जो है, हमारा काम जो है, वहां पे कहीं गैप आ रहा है। जो करना चाहिए वो हम सही तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, टू रीच आउट टू मोर पीपल, टू गेट दैट इमोशनल कनेक्ट। अब कश्मीर, अब जैसे कि एक मूवी बना गुमनामी, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो वो लोगों तक पहुंचा। आई मीन, और अरे अगर लोगों जितने तक लोगों पहुंचा तक था, पहुंचा भी, बांग्ला वर्जन लोगों तक पहुंचा था, बांग्ला वर्जन लोगों तक हाँ, तो पहुंचा था। बंगाल इट में वाज अ लोगों को बिगेस्ट बोलना हिट। चाहिए था ना। तो चाहिए तो था, बंगाल में तो वही तो। लोगों को उठना अरे चाहिए। पिछला सेशन तो मैं इसी पे किया कि कश्मीर फाइल्स और गुमनामी में प्रॉब्लम क्या, वो क्या था। अब ये है कि जब अभी अभी कश्मीर फाइल्स के रिएक्शन में क्या देख रहे हो, मीडिया स्टूडियो में, टीवी स्टूडियो में क्या हो रहा है, मुद्दे को लेकर डिबेट डिबेट्स। चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि सही दिखाया है या गलत दिखाया है, मूवी में गलत जो दिखे दिखा है हाँ। सही है या गलत। उसके बाहर और क्या क्या हुआ था, नया नया इंफॉर्मेशन लोग अपना तरीके से बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मीडिया इसको अभी रिलीज शुरू, मूवी बनने से पहले कोई खास रिएक्शन नहीं था, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। पर जैसे ही देखा कि पॉपुलर रिएक्शन हो रहा है, तो मीडिया भी तो उसी एंटरटेनमेंट बिजनेस में ही है ना। तो हाँ, वो वो लोग तो उठा है। लिए मुद्दे को। तो हर स्टूडियो में जाके अब तुम्हारा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब डिबेट कर रहे हैं।
हर स्पेक्ट्रम के हर कोने से दूसरे लोगों को लाके डिबेट कराया जा रहा है, तो ये मीडिया आगे ले जा रहा है इशू को। हमारे उसमें क्या हुआ, नहीं गुमनामी में सर, क्या ऐसा हुआ? हुआ भी था। आई मीन एक बात मैं, आई वॉज नॉट एक्टिव एट दैट टाइम, मैं नहीं जानता था उस टाइम केस के बारे में, बट जैसे पुरानी वीडियोस देख के व्हाट द इम्पोर्ट आई गॉट वाज इन 2015 एंड 16 आई थिंक, जब फाइल्स डिक्लासिफाई हुई थी तब कश्मीर फाइल्स के लेवल तक का आई थिंक इंटरेस्ट था नेताजी मिस्ट्री में लोगों को, क्योंकि तब भी टीवी में डिबेट्स हो रही थी काफी ज्यादा। यू कैन करेक्ट मी, आई मीन आई डोंट नो, मैं बताता मुझे ऐसा हूँ, देखने से लगता है। फिर वो वहां से रिएक्शन डिक्लासिफिकेशन का नहीं था, रिएक्शन तो था किसका? स्नूपिंग, जो स्टोरी ब्रेक हुआ उसका। स्नूपिंग, हाँ 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 हाँ। वो तो भड़क गए वैसे लोग उस टाइम पे। समथिंग डिक्लासिफिकेशन तो, वाज अ रिस्पॉन्स टू दैट। मैं हाँ बोल रहा हूँ उस ना, टाइम, हाँ सरकार के हाँ, ऊपर जब प्रेशर सॉरी बनेगा, सॉरी सॉरी, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, हाँ डिक्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल्स वाज अ रिस्पॉन्स। हम्म। वो और ट्रिगर क्या था, स्नूपिंग का स्टोरी ब्रेक करना, जो संदीप उन्नीतन ने इंडिया टुडे का कवर स्टोरी बनाया, जो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि कोई मैगजीन का कवर स्टोरी लेकर टीवी स्टूडियो डिबेट शुरू कर देता है, बट इमीडिएटली टाइम्स नाउ ने, अर्नब ने उस टाइम पर स्टोरी उठा लिया, प्राइम टाइम में चला गया, और जैसे ही अर्नब ने उठाया बाकी सारे लोगों ने उठाया, इट बिकम अ ह्यूज इशू, ओवरनाइट इट बिकम अ ह्यूज ह्यूज, इशू। और वो चलता रहा, वो टेम्पो बरकरार रहा टिल द टाइम मोदी जी अनाउंस द डिक्लासिफिकेशन। तो हम जो गए थे मोदी जी से मिलने के लिए उस रात को, इट वाज हिलेरियस। मिलके जब प्राइम मिनिस्टर के घर से हम बाहर निकल रहे हैं ना, तो सारे टीवी चैनल्स के वैन्स लगे हुए हैं कि जो है उनमें से कौन किसको उठा के ले जाएगा टीवी स्टूडियो में। सो दे वर एक्चुअली स्नैचिंग गोइंग ऑन कि अब हमारे स्टूडियो में चलो, अब हमारे स्टूडियो में चलो, snatching going on. That was the level of interest ओके, that time, which दैट could not टाइम, be sustained after the declassification. तो अभी हमें वैसा हाँ ट्रिगर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था गुमनामी के साथ आएगा, पर बंगाली मीडिया ने जो किया, नहीं, बंगाली मीडिया ने आई impacted थिंक this अगर level. फाइल्स जो डिक्लासिफाई हुई उसमें से अगर कोई छोटा सा भी सेंसिटिव फाइल आता तो शायद वो हमने पहले बोल डिस्कशन दिया था, कंटिन्यू। डिक्लासिफिकेशन हाँ शुरू होने से पहले, मैं तुम्हें ट्विटर हाँ पे शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, हाँ डिक्लासिफिकेशन शुरू होने से पहले मेरा स्टेटमेंट है, थैंक गॉड फॉर इट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि हम हाँ कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन फाइल से। हमारा शुरू से हाँ, डिमांड था इंटेलिजेंस फाइल्स डिक्लासिफिकेशन, जो अभी तक किया तो नहीं गया। नहीं, आई नेवर अंडरस्टूड, लाइक पीपल, लोगों को अभी भी मिसकंसेप्शन है कि मोदी जी ने फाइल्स निकाली, ठीक है निकाली, लेकिन लाइक आई एम कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट, मतलब क्या फाइलें उन्होंने निकाली है। व्हाट आई हैव सीन इज इन इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, इफ यू रीड इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो कि 2012 में लिखा था, तो उसमें रामामूर्ति का ट्रेजर वगैरह ये सब कवर किया हुआ है, हर चीज कवर्ड है। मतलब जो फाइल्स बाद में रिलीज हुई है वो तो पहले ही कवर्ड है, तो रिलीज क्या नया किया है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्या तुम आया ये नहीं नया। समझ रहे हो प्रथम, कि हाँ इंडिया बिगेस्ट कवर जब छापा है, कोई छापने को तैयार नहीं था, बिकॉज द डॉक्यूमेंट उस टाइम ओके, पे जो डाला है किताब में, दे वर स्टिल क्लासिफाइड, दे आर स्टिल एंड क्लासिफाइड, हाँ वी वर वायलेटिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स है। ऐसे एक ओके, पन्ने के लिए हमें उठा के जेल में डाल सकते थे सरकार, एक पन्ने के लिए, और वहां पे हमने 100 पन्ने बिल्कुल डाला है किताब, रियली रियली, है ना। तो वही यस, फाइल्स और भी फाइल्स, अब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया है, ये डिक्लासिफाइड फाइल से बहुत सारे नया एंगल्स आए हैं, इंफॉर्मेशन का गैप्स था, वो गैप फिल अप हुआ है, बट नहीं, सेंसेशनल समथिंग दैट स्ट्राइकिंग एड्स टू एकदम द मिस्ट्री, बदल देने मतलब वाला कुछ सम नहीं आया। क्लियरेंस टू द मिस्ट्री। ये स्नूपिंग कहाँ से आया? स्नूपिंग का स्टोरी यहाँ से इस फाइल से नहीं आया है। स्नूपिंग का हाँ, वो स्टोरी आया है जो पहले की मैंने फाइल से डिक्लासिफाई है, हाँ, कराया था, पहले जो क्लासिफाई हुआ मुखर्जी था। कमीशन वाला मैंने करवाया था 2010 में, वहां से आया। तो वो नैरेटिव बदल देने वाली बात, स्नूपिंग वाज अ नैरेटिव बदल देने वाली बात। तो इसमें जो नैरेटिव बदल रहा है, नैरेटिव बदलने रियली वाली, ये नैरेटिव बदलने वाली बात ये इन 300 फाइल्स में से नहीं है। नहीं है, सो उसके दिस लिए इज व्हाट, हमें लाइक स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल इंटेलिजेंस फाइल्स चाहिए। अनदर थिंग दैट आई हैव GPay नोटिस्ड इज वो पीपल लाइक कंट्रोवर्सी, मतलब लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद है। इनफैक्ट व्हाट आई हैव सीन, इफ टू बी ऑनेस्ट, अगर आप नेताजी को टू द पीपल ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हु वाज नेताजी, व्हाट ही डिड, नोबडी इज इंटरेस्टेड एट ऑल, बट इफ यू इंट्रोड्यूस हिम थ्रू द मिस्ट्री,
That is where my interest started. So I read about Netaji in our history book, in class 8th modern history is taught. So in that I have read that okay, there was a person called Subhash Chandra Bose and he made an army. Well, now that has to be my idol. Now that has to be my idol. He has made an army and he was going to literally fight British. Okay. So and then what happened? My uncle told me that there is some doubt about his death. मैंने कहा क्या doubt है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने he told me directly कि he died in Faizabad in the guise of Gumnami Baba. Now why Faizabad intrigued me? Because I live in Lucknow and near Faizabad is my village. I said I have went to Faizabad like literally hundreds of times. I don't know about this how, but that time my mind was not fully developed, so I left aside the issue. But now when I again rediscovered it in 2020, I again rediscovered it, I think through a video of Anuj sir, that is about conundrum, I think. From there the interest again revived, that the seed was sown and then another now the tree has came out. So what I have Very noticed good. is people like mystery. This is a very good story, and why I was so intrigued by this is because of my location. Everything is connected to me. Like I live in Lucknow, and that man was in Lucknow, and that was mind blowing for me. I mean, no one knows about it. अब ये पता करो, Even around Faizabad, people. हाँ. ये पता करो अब भगवान जी तो लखनऊ में एक टाइम थे. अब ये पता करो, तू मुझे ये बता, सुभाष बोस कितनी बार लखनऊ गए और सुभाष बोस का उत्तर प्रदेश के साथ क्या कनेक्शन था? आई थिंक वो उत्तर प्रदेश में जब कैंपेनिंग करने आए थे अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की, तब उन्होंने लखनऊ, सीतापुर ये सारा एरिया उन्होंने घूमा था. पूरे उत्तर प्रदेश सारे डिस्ट्रिक्ट्स लगातार 2 साल टायरलेसली उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग की. तो ऐसा कोई जगह नहीं है जो वहां गए नहीं. और पूरा सपोर्ट बेस बन गया था. हाँ. इनफैक्ट अभी आप पब्लिक इंटरेस्ट देख लीजिए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. From 1 hour you are doing this live stream, right? Why is it that the studio is still not full? You tell why me. is it like that? What is your opinion? No, I literally have no idea. Like 100 people almost are watching it, if I'm not wrong. People are not joining. Like the studio is not full, and not only with you. It is not only limited with you. Even when I'm going to the live stream of Anuj sir, people are not joining only. Like 1 hour has elapsed and the studio is still not full. But why are people not joining? I don't know. People are losing interest. आप लोग बताइए, ये एक बच्चे का सवाल है आपसे. आप लोग स्टूडियो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मैं लिंक पोस्ट करता जा रहा हूँ, फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों? और क्वेश्चन नीचे पूछेंगे कमेंट में. देखो ऐसा है कि दिस इज द वे ऑफ डेवलपिंग द इशू. अब you have to walk through various types of people, various kinds of people. Not everybody will be active. A lot of them will stay on the sidelines, watch, hear, form their opinion, and then go against your views. It's part of growing. वो चलता रहेगा. But the thing is that yes, you are right. People like mystery more. जो मैं अभी बार-बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से कि आपको मिस्ट्री पूरा समझ नहीं आएगा, भगवान जी इश्यू पूरी तरह से समझ नहीं आएगा तब तक जब तक आप सुभाष बोस की लाइफ बारीकी से जान ना लो, समझ ना लो. और वो आपको स्टैंडर्ड बायोग्राफी से नहीं मिलेगा क्योंकि वहां दबाया गया है, बातें छुपाई गई है. तो वो सारे चीज आप पहले जान लो, पढ़ लो. आपका जो सवाल है कि ऐसे क्यों थे, उत्तर प्रदेश में क्यों है, सबसे पहले सवाल उत्तर प्रदेश में क्यों? उसका स्ट्रेटेजिक रीजन था, बॉर्डर के पास है. बट could have gone to Sikkim. Sikkim was even closer. अच्छा. तो
सिक्किम वगैरह वाज इवन क्लोजर, चले जाते, पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। तो ही वाज उत्तर प्रदेश रहने का एक स्ट्रेटेजिक रीजन जैसा था, वैसा एक इमोशनल अटैचमेंट भी था। इमोशनल अटैचमेंट भी था, राइट? उत्तर प्रदेश बिल्कुल, अदरवाइज क्यों जाएंगे वहां पे? तो आप इमोशनली लखनऊ में अटैच्ड जाके थे लोगों से पूछो, लखनऊ में जाके लोगों से पूछो कि सुभाष चंद्र बोस को कितना याद रखते हैं, आपको बता नहीं no पाएंगे one gives a damn. कितनी बार आए, क्या क्या किए। Actually, problem no, Lucknow. Why I give like I spare Lucknow a bit is because Lucknow I don't think so has seen much idols. Bengal has seen many idols. So I am just giving you an example. In Twitter, I was like accusing Bengal for not rising up for Netaji. I was doing that, and एक बंगाली आके तो मुझसे भिड़ गया सर इतनी बुरी तरीके से। यूपी ने नेहरू को वो किया, यूपी is a betrayer of Netaji and what not and what not. So why are you getting so much angry? Then I said कि भगवान जी, he is a believer in Bhagwan ji story. Bhagwan ji has himself said that because of Bengal, Bengal has not risen. Bengal never rose when I came here. Like it could have. You're saying he was having PTSD. He can say anything, है ना? So even Netaji himself is wrong when it comes to Bengal, and that person has मैं blocked. इन लोगों को समझा नहीं पाया अभी तक कि पीटीएसडी पागलपन नहीं है, पीटीएसडी समथिंग डिफरेंट। वही तो पागलपन नहीं है। No, when he is accusing Nehru, when he is praising some RSS and all, then he is not having any PTSD. But when he is criticizing Bengal, तो वो आदमी पागल है। तो यही this is जिस बात से शुरू किया था, जिस सवाल से शुरू किया था, सर have you seen any interest in लखनऊ? मतलब आप लखनऊ में आते हो? लखनऊ में कितनी बार गए हैं हम लोग। अच्छा, 2014 से लेकर 2019 तक कम से कम 5-6 बार गए होंगे हम लोग, इफ नॉट मोर। ओके इफ नॉट मोर। और हाँ 6 बार 7-8 बार तो गए होंगे। यहाँ से कोई रिस्पांस मिलने नहीं वाला है वैसे। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लखनऊ में बहुत छोटा ग्रुप, एक्टिव ग्रुप था हमारा, अभी फिलहाल नहीं है, बट देयर वाज अ गुड रिस्पांस। लखनऊ जो गुमनामी बाबा का किताब हमसे पहले लिख दिया अधीर, ही बिलोंग्स टू लखनऊ। हाँ। So like yeah, the thing that you were saying कि हमें influencer से like more and more you should give YouTube interviews. Like YouTube is a very strong platform. जितने भी बड़े like लाखों लेवल लाखों सब्सक्राइबर्स ले गए, और उससे भी कुछ कम नहीं है इन्फ्लुएंस में कि व्हेन वी डू पब्लिक लेक्चर्स, जब स्टूडियो में खड़े होकर बात करते हैं हम लोग, सॉरी स्टूडियो नहीं, ऑडिटोरियम में जब बात करते हैं लोगों से, डायरेक्टली आमने सामने बात करते हैं, चाहे 300 लोग हो 400 लोग हो, वो तो लाखों लोग तो नहीं हो पाएंगे, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे गो बैक, जो फेस टू फेस मीटिंग का एक जो कन्विक्शन लेके जाते हैं, जो याद लेके जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे तो मैं स्टूडियो में जैसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, कभी ट्विटर में, फेसबुक में वो कर लिया, लाइव कर लिया, बट दैट इज स्टिल आई मीन समथिंग फार अवे, इट्स नॉट टच फील काइंड ऑफ थिंग। बट वो जो जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं हमारे लेक्चर्स में, इतना इंटेंस होता है कि लोग अपना मतलब दिल निकाल के बात करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट वैल्यू। जो जितना टॉक्स होगा उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा होगा, लोग घर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ यूट्यूब इज अ वेरी, यूट्यूब सोशल मीडिया वेरी पर्सनल स्पेस। मैं यहाँ पे बात कर लिया, किसी और के यूट्यूब चैनल में बात कर लिया, किसी ने सुना, वो अपने मन में रखेगा। ये जो पब्लिक मीटिंग में आ रहा है, ये घर जाके 4 लोगों से बात करेगा। दोनों ही कर रहे हैं सर। अब like not like make that much of an impact, लेकिन that will
वॉइस ब्रेक हो रहा है Nami तुम्हारा, files is next आई or कैन not? हियर। कौन बनाएगा Hello, am I audible? Hmm? कौन बनाएगा? गुमनामी फाइल्स? कौन नहीं, बनाएगा? मैं तो चाह रहा हूँ, नो, I'm telling is, अगर आप उसमें देखो ताशकंद फाइल्स में, in Tashkent files, Vivek Agnihotri ji has given a lot of references to Gumnami Baba. Now, why will anyone do that? If he is not interested, Vivek Agnihotri ji is interested. So, if Vivek Agnihotri ji is interested, he should be asked to I don't know. for a I Gumnami don't know. files. He might be Sorry. interested. He might be interested, but he might be interested in Gumnami Baba, but he might be more interested in other issues. So that's why he made the Kashmir files. That's why he is planning about the 1984 riots. That's why he has been talking about the Bhopal gas disaster and not about Gumnami Baba. So and that, frankly speaking, Pratham, I don't think it is his issue. It's not his topic in the sense that uh, it's not something that he has campaigned for ever or owned up in the way that we have done it. So उस हिसाब से I don't think it holds any special significance or meaning as of now. I mean आगे ट्रैक्शन मिलेगा तो वो हमारी बात चल रही है, बाकी कुछ लोगों से बात चल रही है मूवीज वगैरह इसके लिए, तो देखते हैं कहाँ तक से पहुंचती है बात। बट वी आर ट्राइंग ऑल पॉसिबल नेटवर्क्स। जैसे मतलब इन शॉर्ट प्रथम द थिंग इज, मुझे पॉलिटिशियंस और सरकार पे भरोसा नहीं है, मुझे इंसान पे भरोसा है, हमारे लोगों पे भरोसा है। जो करना है सब मिलके करेंगे, अगर इकट्ठा हो पाए, एकजुट हो पाए तो। ये रीता आंटी पूछ रही है, आप तुम लखनऊ में रहते हो, हमारा टॉक क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करा? सर मेरे में कहाँ कैपेबिलिटी है कुछ ऑर्गेनाइज कराने की। लाइक आई एम स्टिल इन 11th क्लास में, क्या कर सकता हूँ? हाँ तो 12th में जब जाओगे, अभी तो सच में तुम्हारा अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आई एम नो वन, आई एम लिटरली नो वन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम समवन, अदरवाइज पीपल विल नॉट लिसन टू यू। लेकिन या बट आई विल डू इट, इवेंचुअली आई विल डू इट 100%। नहीं सो लेकिन तब तक तो हु कैन वेट फॉर दैट लॉन्ग? हाँ, समवन होना है वो हो जाए, अरे हो जाए, वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कोई वो नहीं है, जो होना है वो होगा, टाइम पे होगा, और सबको अपना अपना रोल निभाना है, जो करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पीपल आर गेटिंग टुगेदर। हाँ, इन दी एंड यही निकलता है कि पीपल शुड बी मेड मोर अवेयर। अब उससे ज्यादा और क्या बताया जा सकता है? We have to reach out. We have to reach out to people. We have to reach out to people and get more people involved in this. नहीं तो ये पवन कल्याण कैसे बात करते हैं और लोग इतना enthusiastic कैसे हो जाता है? So we should be able to get Pawan Kalyan on our side. I mean, he has not said anything wrong. He did not mean any disrespect. He was very respectful to Krishna Netaji. He was respectful. Pawan Kalyan was very respectful towards Netaji in his speech. वो बताया कि वो जापान गए थे मार्शल आर्ट सीखने के लिए, तो वहाँ उनका जो टीचर थे, गुरु थे, वो गुरु उनको ले गए रिंकोजी मंदिर। रिंकोजी मंदिर में जब गए, जो प्रीस्ट है उनकी बेटी आई मिलने उनसे, और ही बिकम वेरी इमोशनल कि इतने बड़े लीडर, उनका रिमेन्स ऐसे छोटे से एक टेम्पल में ऐसे हालत में रखा गया है। तो because he does not know the issues, the details, so obviously as a common man he got very emotional, and that was very nice of him. It was very nice of him to come back and raise the issue. So yes, आप कोशिश करेंगे कि to get people like him on our side so that they can talk the हाँ, but as Anuj sir has always said कि government hostile नहीं है, hostile नहीं है। Yeah, but like now you people are doing obviously what you are doing. अगर politicians खड़े होके बोलने लगे for this issue, hostile नहीं है is not a great thing, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि हमने 2005 से लेकर 2014 तक तो hostile गवर्नमेंट के रहते हुए ही काम किया है ना। तो hostile हो ना हो, फ्रेंडली हो ना हो, if they are not doing the full and final thing, तो फर्क नहीं पड़ता कि दोस्त है कि क्या है।
ठीक है, तो करेंगे, जो करना है करेंगे। हमें ज्यादा किसी से प्यार भी नहीं है, ज्यादा किसी से नफरत भी नहीं है। जो काम करेंगे हम उसके लिए बोलेंगे। दैट शुड बी द एटीट्यूड। तो सो देखते हैं। अभी लाइक हाँ, सो अभी लाइक तो आपका फाइनल प्लान यही है कि लोगों को करना है। एक्चुअली we have made a group, we have made a small telegram group where we I have know. accumulated I think around 200 people, 200 people, हम्म, लेकिन but only 10 are active, 10 are serious, ऐसे and ही 10 are ऐसे ही active and only 5 are serious। ऐसे ही होता है। लाइक आई थॉट कि स्टैंडर्ड थंब रूल, ये 200 लोग थंब अगर रूल हम है। जमा कर लेंगे, हाँ, we can create a type of IT cell for नेताजी। कोई इंटरेस्टेड है बट लोग ज्वाइन तो बहुत एंथुसियास्टिकली करते हैं, पर वहीं फिर आगे चला जाता है ना मेन। बहुत अच्छी तो अच्छी बात है ये। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, ये टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, मीम्स बना रहे हो, इट्स वेरी गुड। करते रहो, हाँ, लगे रहो, लोग आएंगे हम्म जाएंगे। तुम लोग अगर अगर 6-7 बंदे भी कोर ग्रुप बना पाए उसमें, हम्म नो देन, बाकी लोग फ्लोटिंग होंगे, आएंगे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम्म हाँ चलो, हाँ, दैट इज ओके। ओके सर, फिर बाय। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद सर। जय हिंद। So we don't have any more people for the studio tonight, and it's going to be it's 11:15. So we have been doing this for more than 2 hours. Uh, I can see Shavi requesting one more episode with Rita ma'am. I'll ask her if she has anything to add, and if he has anything, if she has more to talk about, if she is willing, why not? Surely, she is more than welcome anytime. We'll do another session if she is comfortable with it. And similar requests have also come for uh, Arora ji. I'll ask him also if he has anything to add. If he has anything to add, we'll do another session with him. तब तक काम करते रहते हैं, बात करते रहेंगे। आप भी आपके फैमिली, दोस्तों, जो भी है, जितने सारे लोग से बात कर सकते हैं, बात करिए, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का जानना और इसके बारे में अवेयर होना। तो आई होप दैट विल हैपन, एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। As I keep saying that ये 2022 जो है is a very important year, is the 75th anniversary of our independence and 125th birth anniversary of Netaji। तो ऐसा जो संयोग है, तो उसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, एंड वी शुड पुश फॉर द वैक्सीन। तो बात करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and don't forget to share our posts, try to organize our talks, lectures, and again, shamelessly, do provide your support. We do need your support, all the resources, details नीचे है, टिकट पे है, डिस्क्रिप्शन में है। So that's all for tonight, फिर मिलेंगे। Thank you, जय हिंद, good night।